आवाज नहीं। बड़ी मांगा थी हो 7 के बुढ़वा बोला वो 7 के ये दिया या कितना था। हाँ हाँ हाँ, अनिल के बगल वाला ना 7 का दिखाई। हाँ मुझे जैसे अनिल हमको से भाड़ा चाहिए बात की बजाय तो जहाँ पर तो देखें हिसाब से देखो 7 के। हाँ इनका कुछ कहीं जगह जमीन लेना होना है। क्या कितना दाम में ना बोलता तो कहीं इनका ताव मिल रहा है। न समझे जमीन के कुछ काम है ये चलते। हाँ ना जमीने के ताव है कहीं
Hello, hello. Yeah, good evening, one and all. I'm extremely sorry for the delay. I thank each and everyone for attending DICCI NextGen pre-launch. Now, the time has arrived to add some dignity and fragrance to our dais. It's time to invite our honorable dignitaries to occupy their respective places. On behalf of DICCI NextGen, we would like to convey birthday wishes to our beloved National President, uh, Padma Shri Nara Ravi Kumar sir. I think a role model is a mentor, someone you can see on daily basis and you can learn from them. Being a role model is the most powerful form of education. Respected Padma Shri Nara Ravi Kumar sir, wish you a very happy birthday, sir. Initially, I would like to invite the person whose actions are inspired us to dream more, learn more, and do more, and become more. You are really a great leader, sir. I take pleasure to invite our founder chairman, Padma Shri Milind Kamble, sir, to please come on the desk, and I request to present the bouquet. Yeah. Next, it's my privilege to invite. He is a leader with courage to go first, to put himself at personal risk to open a glorious path for others to follow. He is none other than a walking role model, our guest of honor, our national president, Padma Shri Nara Ravi Kumar sir. I request to present the bouquet. Now I take opportunity to invite a man whose greatness is not measured by what he accomplished, by the way works he has done to reach his goals. He is none other than our guest of honor of this event, Surender Manko sir, IRS Commissioner GST. I request to present the bouquet, Renu. Next, it's my pleasure to invite the powerful person who is called a great motivator. He set out to make a difference with his passion. So now I will take offers to invite our guest of honor, Dr. Rajanayak sir, National Vice President, DICCI. I request to please present the bouquet. Next, I profoundly delight to invite a person who's always mean by his actions that to get start is to quick talk and start doing. Our guest of honor, Mr. Sanjeev Dangi sir, National President, National Vice President, DICCI. I request to present the bouquet. Yeah. With equal pleasure, I would like to invite Ms. Maitri Kamble, National Convener, DICCI NextGen. I request to present the bouquet. Uh, and I like to uh, honor the presence of Kattarapaka Ravi Kumar sir, National Head MSME Vertical, and Suresh Nayak sir, National Head Food Processing Vertical, and Rahul Kine sir, South India Vice President. Yeah. And I would like to say a few words about our State President, Mrs. Aruna Dasari, DICCI Telangana Chapter.
being a woman, a mother, and an entrepreneur who is relentlessly working towards the accomplishment of Dalit entrepreneurs, always supportive and guide for all the youngsters, and available at any time, either personally or by phone call. He is unfortunately not present here due to some personal emergency. And I would like to hand over the event to Maitri Kamde, National Convener, DICCI NextGen, and I'll invite Maitri to give the welcome address. Thank you. Everyone. Uh, it is quite honor that the Connections pre-launch meeting is such a houseful show, and I would ask everyone to give a round of applause for that. And it is always our pleasure to have events in Hyderabad because we always see such amazing synergy with all the people here. Um, I welcome everyone for this pre-launch meeting of DICCI Next Gen. We've been hearing a lot about what is DICCI Next Gen or this word particularly. Today, I'm here to explain everyone what we are going to achieve in this vertical. I am very happy that a lot of my national team is also here to support us and also to participate in this pre-launch meeting. The first thing I would like to share here is whenever we talk about a nation or any uh, society, we always consist the entire vision upon the youth of that society or that nation, because the vision they are going to carry forward it. So similarly, Dicky has also put us under a lot of responsibility with the vision of creating entrepreneurship in uh, scheduled caste and scheduled tribe community. With this great responsibility, we have also founded the chapter in Maharashtra to understand what all opportunities we can do. We can call it as a pilot chapter, and we started the work there. DICCI NextGen was founded in 2016 and has been constructing its path since that day. And today we are formally announcing that this year we will be launching it pan India. And I think this is also one of the contributions to the vision of 2047, that in next 25 years we have to make presence of DICCI NextGen everywhere. The opportunities what we get today as a youngster is quite different coming from this community comparing to what our previous generation has faced or has had. We have a great ecosystem, we have a established network, and we have many other upcoming opportunities which are soon will be our under our doorsteps, near our doorsteps. And I think we need to leverage that through DICCI NextGen. We hope that DICCI NextGen creates a entire platform for youngsters. It is a hub for all the next gen ideas, new entrepreneurship ideas, which are maybe from sustainability field, which are from environment, tech ideas. We have people coming across from all sectors and across India. And I'm glad that we conducted a event even before this day and see that there is such diversity we already have as a vertical. And I think coming to my point that DICCI Next Gen is the future of what we are as a community. And I think startups culture or startup community is equally important for any country's growth.
And DICCI NextGen is trying to carry the startup culture, inculcate it in the upcoming generations, new generations, and set example that we are definitely at par with everyone. And we also have that kind of uh, talent in us. And I think this is enough for the welcome address. We would really like to listen from everyone here on the dais today. Thank you so much, Arun, for giving me this opportunity, and thank you so much, Ravi sir, for this program. And I would like to also extend birthday wishes to you. Uh, thank you so much. And I would like to call uh, Shri Rahul Kiran Chanti, Vice President, South India, to say a few words. Good evening to all. First of all, I would like to extend my grand wishes to Nara Ravi Kumar Garu on his 59th birthday. And and a respected distinguished guest on dais and next gen young mind of DICCI from throughout the nation, not only Telangana, AP. DICCI ఇవాళ ఒక నూతన డైమెన్షన్లో ముందుకు పోతా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇవాళ యంగ్ ఇండియా అంటాం, యంగ్ వరల్డ్ అంటాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ కమ్స్ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్. సో DICCI ఆల్సో ఫోకసింగ్ want to prosper the young entrepreneurs among our community especially. That's why DICCI started another mission like DICCI NextGen. Part of that, today we are inaugurating DICCI NextGen initial meeting, pre-launch meeting. Very soon we will grand launching there. So I request all youngsters, అట్లా అని చెప్పి మా మున్నారావు జనార్దన్ లాంటి అంతా నెక్స్ట్ జన్ వస్తే మళ్ళీ మా పరిస్థితి అనే ఒక రకమైన బదులు ఉన్నారు. కాబట్టి అట్లాంటి భయాలు ఏమి పెట్టుకోవద్దు ఎవరు కూడా. హ్యాడ్ దేర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ముందు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉన్నది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ని, గ్లోబలైజేషన్ని, ఈ డిజిటలైజేషన్ని సపరేట్ చేసి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది సొసైటీలో. ఎందుకంటే ఈ గ్లోబల్ వరల్డ్లో, ఈ డిజిటల్ వరల్డ్లో యంగ్ జనరేషన్ అంతా కూడా డిజిటలైజ్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఆ యంగ్స్టర్ని ఇగ్నైట్ చేయాల్సిన అవసరం మనకు ఉంది. కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ వస్తున్నాయి. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టీవీ హబ్ అని పెట్టేసి టీ హబ్ సెకండ్ ఫేజ్ కూడా కంప్లీట్ చేసింది. థర్డ్ ఫేజ్ కూడా పోదామని ఆలోచిస్తుంది. అంటే గవర్నమెంట్ ఫోకసింగ్ యంగ్స్టర్స్. సో మనం కూడా ఆ లైన్లో ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి DICCI కూడా చాలా ఇనిషియేట్ చేయడమే మిగతా పాన్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికన్నా ముందుగా మనమే మొదలు పెట్టామని చాలా గర్వంగా చెప్తాను. ద సేమ్ టైం మీరందరూ కూడా ఈ నెక్స్ట్ జెన్ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకుపోవాలని ఆశిస్తూ నేను ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. Now I would like to call Mr. Suresh Nayak, National Head of Food Processing Vertical, to say a few words. Good afternoon, all. First things first, sir, many happy returns of the day as you're entering your 60th year. So, yesterday I told you're entering your 60th year, I'm entering my 40th year. So, 60-40 पे कुछ business करेंगे बोल के बोल रहा था मैं. So, let's think about it. But either ways, I wish you will have much more prosperous years to come. And from the bottom of heart and on behalf of everyone, I wish a very happy birthday again. And sir, Chairman sir, हमारा birthday पे भी आ जाओ sir next time.
I'm inviting. Anyways, it's so humble that, whenever there is an occasion in Hyderabad, I see that especially Honorable Chairman and his family, they make sure that they make it a point, however busy they are, they attend, and that needs a lot of compassion and empathy towards their own people and also the organization. I think for that we need to have a good clap. Keep loving us as you are doing always, sir. And my friend Sanjeev Dange and my brother Raja Naik and sir, sorry. I Sorry, sir. Surendra Mankoskar, sir. Sorry, I didn't get your name, but sorry for that. But anyways, happy to see you here on the 60th birthday of. Eh? No, no, sir. Actually, off the record, I'll solve my GST problem with you. And Maitri, I think it's her day today. I think, she's been part of DICCI as much as, all of us part of, or like, she's been like, I somehow feel like she's taking the charge of next generation entrepreneurs, but she already got exposure and experience of all the old entrepreneurs of DICCI, all this while that she's spending time for last 1 decade on this platform. So I'm very confident that you are the right person and you will do the right justice for this particular organization. And we couldn't have asked for any better person than this. So I wish you all the best. And I hope that, you keep up the name of the organization and very specially name of your father going forward. And Arun, take up Telangana. If you don't, we all are there to support you. So just with all confidence, you take up. So anyways, quickly, for all the new entrepreneurs, I thought all young students I'll get to see today, but I have a mix of all generations here. So quickly, I want to tell you guys that one thing, just that, a lot of things have changed. A lot of things have changed in the past. So your future is going to be completely different. So don't take any formulas from the older generations or older generation business. I'm telling you, even Ratan Tata comes and tells something about his business, how he evolved, doesn't stand, they stand absolute in this particular generation. So being the new generation, your thought process and the way you are going to move forward is completely different from the older generation, how they thought and you can take the ethics and values of the older generation, but I know that like a typical Agarwal said, if I ask you to sit at 7 o'clock in the store and leave at 10 o'clock in the store, none of you guys are going to do it. So basic thing is you guys are going to have your own style. So even if the older generations are rubbing off on something on you, I know that you guys will not excel in following that. So listen to your heart and make sure that, there are three things which I see that new entrepreneurs are failing or like, they are they're not picking up in a right manner when it comes to business. So first thing in the business is, you pick up the right niche. When I say about picking up the right niche, pick up the right business, pick up the right business which suits your personality and which has got business. Like for example, a lot of youngsters will come and tell me that, sir, Christmas trees बेचने का मेरा business है. So Christmas trees बेचने का, how much ever innovative business you have, but it's just like, after Christmas vanishes, it vanishes. So ultimately what I'm trying to say is like, just see that, your niche, you need to be niche, but your niche should have a wider range of business opportunities. And make sure that you're solving the right problem, that burning problem that you're solving. So I'm not saying you solve a problem of a typical disease like corona and all. I'm talking about solve a problem which customer is willing to pay. So that's very, very important. So just don't go with
somebody is making money in this particular business, I'll do business. That only happens in real estate, unfortunately. So you buy a land and somebody is buying a land, you buy a land and you make money. But in business, if you're doing business, try to solve the problem, which is a burning problem, and see that, there is a customer to pay for it. And the third most important thing, don't go with the bubble of what is happening in the today's world of unicorns who are concentrating on only top lines. I'm telling you, business is only concentrating on profits. So top line or revenues really doesn't really matter. Don't go with that myth, or neither you fall in that trick. I'm telling you that only few companies will come out of it. Most of the guys are falling into disaster, especially new age guys, reading that some Ola got this much, some blah 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 got this much. So concentrate on your profits. Make sure that you make right from the day when your business is bottom line strong, not the top line strong. So just keep this in mind. And overall, I just don't want to give too much of lecture today. On after the launch, maybe there's so many instances will come where I come and speak to you about how to do step by step, what to do and all. But here I leave it here because today it's a very, very special day in DICCI that we are launching another platform, which is DICCI Next Generation. We hope that DICCI Next Generation will be completely a contradicting platform, a 180-degree shift platform from what we have right now. And we want to see more and more educated people from different walks of life coming in and make it more and more vibrant platform. And we look forward to see such platform under the leadership of Maitri. And we are there to help you, all the entire national team, and all of us are there to help you guys in wherever you're stuck. And I leave it here and thank you so much. Thank you so much, Suresh sir. I think it was a very needed lesson for all of us young entrepreneurs. Now I will call Mr. K. Ravi Kumar, National Head MSME Vertical, to say a few words. Good evening, everybody. Respected dignitaries on the dais, our guest Surinder Kankoskar, IRS Commissioner of GST, and our Chairman, sir, National Working President, Vice President, sir, and National Convener Maitri, and State Coordinator Arun for the NextGen, and all young and youth, what we call Dalit youth. I don't say Dalit youth. ఎందుకంటే ఈ దళిత్ అనే వర్డ్ని ఇంకా మనము మీ జనరేషన్ నుంచి తీసేయాలి. ఎందుకంటే అంటే మేము 20 years కిందట బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎన్నో ఒడిదొడుగులు అనుభవించుకుంటా ఒక స్టేజ్కి వచ్చినాము. సో మీరు ఉన్న ఈ పొజిషన్లో మీకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి అవకాశాలు, అంటే గవర్నమెంట్ పరంగా, ప్రైవేట్ పరంగా, మార్కెట్లో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో డిక్కీ స్థాపించడము, ప్రతి దళితులు ఉన్నట్టు ఎవరైతే యువకులు కానీ వాళ్ళు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి ఈ 17-18 సంవత్సరాల జర్నీలో ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్, ఎన్నో మైలురాయిలు దాటి ముందరకు వచ్చినాం. సో ఈ క్రమంలోనే నెక్స్ట్ జెన్ అంటే మనం చాలా బుక్స్లో కూడా చదువుతుంటాం. మనం భారతదేశంలో ఉన్న పాపులేషన్లలో 20-30 years ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక 70-80% ఉంటారు. అదందరికి తెలుసు, అది యంగ్ భారత్ అంటారు. సో దీంట్లో మన పాపులేషన్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 30-35% దీంట్లో ఉంది. సో ఈ యంగ్ జనరేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అసలు? విలేజ్లలో తీసుకోండి, రూరల్ తీసుకోండి, సిటీలలో తీసుకోండి, ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ మనం మామూలుగా మేము సార్తో కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు, ఎప్పుడన్నా చైర్మన్ సార్తో కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు చాలాసార్లు మాట్లాడుతుంటే అసలు ఈ యంగ్ జనరేషన్ ఏమవుతున్నారు, స్పెషల్ దళిత్ ఏమవుతున్నారంటే అంటే మేము అబ్జర్వ్ చేసింది, ఒక అతను ఐఐటి, ఐఎం ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్తున్నారు. కొందరు చిన్న 10th class డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయి, ఇంటర్మీడియట్ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయి వాడు ఏదో లోకల్గా ఏదో వాడిని సర్వైవల్ చేస్తున్నాడు. ఇట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ అన్ని చాలా ఉన్నాయి, మీరు కూడా గమనిస్తారు.
నేను ఒక సినిమా చూసిన అంటే రీసెంట్లీ. ఆ సినిమాలో ఒక యంగ్ బ్యాచ్ ఏదో చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటే వీళ్ళంతా దళితులేరా ఇట్లా చేస్తారని ఒక డైలాగ్ వచ్చింది. అంటే సమాజంలో ఎవడో తప్పు చేసినా అది దళిత సమాజమే చేస్తుంది అనే ఒక ముద్ర అనేది ఇంకా పోలేదు అది. ఆ ముద్రను చెరగొట్టే బాధ్యత 100% మీ చేతిలో ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్లలో మీ బాధ్యత ఎంతో ఉంది. మీరు చేయాల్సిన ఏత కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో రేపటికి అంటే మీ మీ తర్వాత వచ్చే రేపటి తరానికి అదొక దీక్షుషిగా ఉండాలి. అందుకని మీకు ఒక 100% బాధ్యత ఉంది. ఓకే, మేమందరం బిజినెస్లు చేసుకుంటా డెవలప్ అయ్యకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చుకుంటా చేస్తున్నాం, ఓకే. బట్ నెక్స్ట్ తరం అంతా మీదే ఉంది. మీ బాధ్యత. ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు రాత్రికి వెళ్ళి మీటింగ్ అటెండ్ చేసినాం కదా, రేపు ఇంకో బిజినెస్ పెట్టేద్దామంటే మాత్రం సురేష్ చెప్పినట్టు అది 100% రాంగ్. ఎప్పటికైనా ఏ అడిగేసినా ఏం చేయాలని కానీ ఒకటికి 10 సార్లు ఆలోచించాలి. డిక్కీ సపోర్ట్ ఇస్తుంది 100%. ఏ విషయంలో ఫైనాన్షియల్ కానీ ఏ ఐడియాలో కానీ ప్రతి విషయంలో డిక్కీ సపోర్ట్ తీసుకోండి. ఎక్కడికో పోయేసి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి లేకపోతే ఎవరు చెప్పిండని చెప్పేసి అక్కడ ఏదైనా చేసి లాస్ అయిపోయి, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ కిందనే ఉన్నాం. కింద ఉండి లాస్ అయిపోయి ఇంకా కిందికి పోవడం కన్నా మీరు ఏ స్టెప్ వేసినా కానీ ఏ ఐడియా తీసుకున్నా కానీ ఎటువంటి మీరు ప్రయత్నం చేసినా కానీ డిక్కీ ఉంది, నాకు డిక్కీ అనే ఒక సపోర్ట్ ఉంది అని ఆలోచించి మీరు ముందరకు అడిగేయండి. దీని ప్రకారంగా 100% అంటే మనము ఒక 5 years తర్వాత నేను ఏం కావాలని చెప్పేసి మీరు ఆలోచించి ముందరికి వెళ్ళండి. 100% సక్సెస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీరే, నెక్స్ట్ తరానికి మీరే ఒక దీక్షగా ఉండాలని మీరు ముందుకు సాగాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now I would like to call our National Vice President, Shri Sanjeev Dangi, sir, to say a few words. Good evening, everyone. I'll just say more than a few words, not many. First and foremost, our chief guest of the day, Mankoskar Surendra Kumar Chandrakant Rao ji, Commissioner of GST, our founder chairman, Padma Shri Dr. Milan Kamble ji, our national president, Padma Shri Ravi Kumar ji, our national vice president, Dr. Raja Nayak ji, NextGen convener, Maitreyi Kamble ji, coordinator, NextGen coordinator for Telangana, M. Arun Kumar ji, and dear friends, some of you have come from a long way. Thank you for coming. So DICCI NextGen, as Maitreyi has already said, it has been there on the scene for last 5 years now. So we are formally pre-launching it today, and soon we are going to launch it again in Hyderabad. I'm sure Ravi Nara sir will tell us more about that when. So DICCI NextGen is basically we are trying to create a platform for our youth below 35 years of age. As you know, the demographic dividend of this country, 18 to 35 years of age group, 65% population is there. In that, roughly about, you can say 22, 23 crore people belong to scheduled caste and scheduled tribe. It is DICCI's endeavor. In the morning, there was a session going on how do we see our country at 2047. So it is DICCI's thinking that if we empower this youth today, you know, we are going to cut down a lot of journey, lot of difficult path for empowerment, for prosperity. So we need to concentrate on NextGen, and you as NextGen members should help each other to, you know, go to greater heights and much faster than what the earlier generations have done. It is also the endeavor that DICCI NextGen should become a premier organization, a youth organization for SC and ST in this country, because we can expand the base beyond entrepreneurship, like what we are trying to do in DICCI also. Entrepreneurship will be our core area, but we'll take support of
people, like-minded people in other fields also. Uh, so DICCI NextGen has been doing some programs of late. They're doing some programs at various places. Recently, they did a program with ICCR, that is Indian Council of Cultural Relations. Uh, it is under the Ministry of External Affairs. And under the Azadi Ka Amrut Mahotsav, they are calling delegates from all the countries, from the democratic countries. And recently they had a batch of international delegates from NextGen Democracy Network. Again, that below 35 years. And these people are entrepreneurs, leaders in their country, in both the parties, the ruling party and the opposition. So it is a networking. So I was very happy to tell you that, and some of you sitting here were there for that meeting. It was held in Taj Ambassador in Delhi, where delegates, about 35 delegates from 6 countries had come. So it was a wonderful program which was conducting. So again, as you have to think out of the box, you have to do something, and you have to really balance. Sureshji just said, don't just think about unicorns. Well, you can think about unicorns also, but don't just think about unicorns. Have a strong bottom line, as he has said. DICCI, and not just DICCI, our society expects so much from you people. Whatever our parents, our elders have worked hard with Dr. Ambedkar's blessings, we have come so far. But it is really in your hands to take it to the next level. So all the best to you, and all the best to the organization, to DICCI NextGen. Tomorrow, DICCI will like to be known, as the parent organization of DICCI NextGen. So that is the level you should take it to. And I congratulate all of you again, and thank you, Maitri. Thank you so much, sir. And yes, to my friend, philosopher and guide, a very, very happy birthday. Thank you so much, Sanjeev, sir. Now I would like to call our another National Vice President, Shri Raja Naik, sir, to say a few words. सबको जय भीम अंदर को जय भीम अंडी dignitaries on the dais, my brothers, sisters of the dais, and my friends. First of all, my hearty wishes to, again, my guide, mentor, Sri Ravi Kumar sir. Happy birthday, sir. Coming to today's talk, NextGen. Today, here, NextGen and first gen, both are here. I am the first generation entrepreneur. So NextGen entrepreneurs are also here. And not only me, many are leaders are also there. And again, DICCI has created many entrepreneurial leaders from the first gen. So first gen has thought a lot of, seriously, they are taught from several years about the next gen. So like Suresh Naik and other speakers have already told much and a lot of messages went to you all about what is the entrepreneurship and other things. But in between that, if you talk about next gen, today the entire next gen, most of them look for jobs. As they finish finishing schools or their education, they look for jobs. I'm sure Maitri is not talking about jobs here. We are talking about entrepreneurs. So we want to create next gen entrepreneurs. DICCI wants to create that. So coming on that, see, today you are the most luckiest people, the lucky, the next gen. Why? Because we also started entrepreneur. We started our businesses, but we never had DICCI.
We never had any organization to support us, to guide us, or like NextGen. Nobody was there for us, but we started. No support, no reservation, no financial access, no land access, nothing, nothing. Access was not there for not only to me, to everybody, especially from the SC/ST community. But we have come up. And chairman was very clever in that. He selected the best among every state, I can say. Every state, we are very proud that every state is led by a very strong and successful entrepreneurs in the entire pan-India. So now that that leadership has given a thought towards the next gen. And next gen, what is there for next? Like earlier I said that everybody looks for a job because the parents or they must have taken a educational, most of them, they must have taken an educational loan, or you have completed your studies on reservation, on quotas and all those things. But immediately if you think, now Maitri will come and say, you become an entrepreneur. So what you require? Everybody's question will be, Maitri, get me loan. Get me loan. Very simple. We want loan. We want money to start an entrepreneur. Everybody has got an idea. Like every day you see magazines, TVs, social media. Overnight people have become millionaires, billionaires. It's all false. It is most of them are. It's like Suresh said, very unicorn companies are like Ola and all those things. One or two are there. The rest everybody have gone, because you know that I come from Bangalore. Bangalore is a hub of startups for entire India. But what are the success stories? That is very important. So success stories are very less. So especially when it comes to SC/ST community, we have very little, the parents will be having very little savings, or some savings will be there. So you take that money and we cannot take the risk. Earlier we have taken risk. Narasar has taken risk. Milan sir has taken risk. I have taken risk. Everybody have taken risk. Suresh Nayak has taken risk, and now is into very big. Is a very big businessman, like that. So, but today, to handhold you, DICCI is there. DICCI has already created a platform where you get rupees, not even talk about thousands of rupees. DICCI has created a platform for SC/ST use where you get crores of rupees loan without collateral. But again, everybody's question mark will be collateral only. What is the guarantee you can give? So without guarantee, without any collateral, there are systems, there are schemes across the states and pan-India. We have, for example, to say Stand Up India, where you get 10 lakhs to 1 crore, a loan without any collateral. So you ask some people, sir, it's all talk only, nobody gets loan. But when you come into the DICCI platform, there is 100% success rate. Everybody who has approached through DICCI, most of them are young people in between 20 to 30, 35 years of age only, who have taken the loans already. Today we are launching officially, but for years together, we are already handholding the youth to get loans. So it is on our data where every state has got loans on various transportation, logistics. For example, now, for example, if you talk about Suresh Nayak, we had a ST, for 50, 60, only in Telangana, we have got loans of 50, 60 people, SC/ST, more than that. So all 1 crore loan, 60 lakhs, 70 lakhs, 80 lakhs, and all are not, they are all first gen again, next gen. In between, they are, they're all between below 30 years of age who have finished their graduation and they have come out. So we have already seen the success rate. So DICCI is what I'm trying to say is, without DICCI, you may not get loan. Without DICCI, you may not get a project. That is for sure. We have seen, it's our experience, and many of your experiences also, I think so. But when you go on in the name of DICCI, bankers also will respect you, will honor your project, and all those things. Otherwise, also already you must have seen our Telangana chapter's DICCI Business Facilitation Center is already opened, and we are already handholding the youths to guide them to make their project reports, to make their company, even the product. Because today,
for any next gen or the youths, what you require is the very important things is the one is the product. What product? For that product guidance, we are there for you. For us, nobody was there that time. For money, banks are there, and banks will listen to DICCI. That much assurance I can give, because we are already doing such kind of awareness programs, and we are connected to banks. We have signed MOUs with 4 or 5 nationalized banks for thousands of crores, not hundreds of crores, thousands of crores. We have signed an MOU. So this bank problem also is solved. And coming to land, to start a factory or an industry or anything, you require land. So for that also, we have closely working with the governments, respective states. We have, for example, I come from Karnataka. We very closely work with the government, and we see that any member, you should get a land first. 10,000, minimum 10,000 square feet to 90,000 square feet of area. So we see that our people get the land. Once you have the land, automatically you get an access to the bank. But because you have the land, you get the loan. So products we gave you today, most of the, we always talk about food now. Even in the afternoon, we were talking about food industry. A lot of success rate is there. We were talking about Ministry of Food, where you have 50% subsidy. Not subsidy, it's a grant money. For example, your project is about 10 crores, you get a direct grant of 5 crores. How many are aware of this? NextGen, first gen. Nobody is raising their hands. I personally have spoken so many times in the same platform. So that means you don't give ears. I think most of them are on the mobile phone on your screen. So newcomers, okay. Many of them are newcomers. So there is an opportunity in the food industry. And now in the coming days, we are organizing a program on APEDA, from APEDA. So about food only again, agriculture, agri-food. So lot of scope is there in the food industry. So you people have to focus on that. And definitely DICCI is always there for the next gen. Like I said earlier also, there was nothing for us. Today, everything is there for us. Only thing is you have to show your interest. We get you the finance also. As long as your project is vital, is successful, definitely we are going to handhold. DICCI will handhold you. And we have, you must have seen the world-class office has been opened in the Telangana chapter now. How many have seen all the office? At least you have seen the office today? DICCI office on second floor? So, only one is raising the hand. Yeah. Okay. So we have a very world-class office facilitation, business facilitation center here. We have office at Bangalore, we have at Pune, Delhi. Likewise, pan India, we are going to come up with these centers, and we are going to handle the youths of this community. So now we were talking about 2047. So even our chairman's view also is that only because he is also he's a very good friend of our Prime Minister Narendra Modi. He talks a lot with them, and he has committed with the Prime Minister also that we will see that n number of entrepreneurs will be created from the SC/ST community. Young entrepreneurs we are going to create, and in the coming days we are going to have a very big show in Delhi also on Stand Up India, where we have 5,000 stalls will be there from the SC/ST community. So my friends have come from Madhya Pradesh, a tribal team and now has come, sir. So very happy to see them there. From Chhattisgarh, people have come today. It's not only Telangana here, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Bangalore, Andhra Pradesh, everywhere, Maharashtra, everywhere people have come. So it's a great pleasure to be here, that you are having you all here. So a lot of things are there, and we are always there to support you. DICCI is always there to support, and anything, anytime you can reach. And I congratulate Maitre on this, and we are always there with you, Pan India, and also Arun. Don't get nervous, and I think first time. Maestro. I told that's why first gen I told no. So when first gen means I started my career at 17 years of age. There was no guidance, nothing, no annam ledu, చదువు లేదు. అలాంటి పరిస్థితిలో మనం వచ్చాము.
Ante, that was, I think it is not the platform to say, but still, since I never had, we never had, not only me, many of all the success stories are like that only. It's not that only me, but I struggled a lot. My parents could not pay the fees also. So in my 7th standard, 9th standard, I'm a school dropout. But today I have 2,000 students I have running schools, English medium schools in Bangalore. So I started my career selling for on the sell. I used to sell garments. I used to come to Tamil Nadu. People are here. I used to come to Tirupur and get AG-wise sell on path of Brigade Road, one of the posh areas. Brigade Road means we have to. My son goes in the BMW to the Brigade Road. I was selling chapel on the footpath, the same street. That's the difference. So my children go in this one. So like this, so we can create. So when I can do it, a school dropout can do it. I have a success story, and the crores of rupees turnover without any support. Today, banks call us and give us loan. You keep the account with us. You keep the account with us. Bring your account to this. It's like that. So, but all these things, that time there was no DICCI at all. So that was a very big journey for me. Started from selling clothes on all those things. I into multiple activities. Got into, because the school chased me out, I started a school. And today, I have a B.Ed college where it's almost 2005 to 2022. I have created thousands of teachers to the nation. We have created. Every year, 100 teachers come out of from my college. Every year. So it's almost 15 years of journey today. So I have a BSc nursing college. So we are into nursing. We have produced hundreds of nurses, and my students are studying, working abroad in the entire half of the world. And I have schools where I sold my chapel, shoes, everything on the road. The same road I took a building. So there I have a school. And parents are deployed. Maximum they can finish 1 year in my school. The service we are giving. And 30 to 40% are from the SC category and the BC Muslims. Because my area is Muslim, so all are. So we serve that category. So I'm here to tell that when I can do it, I can see success. You people being graduates, double graduates, all have finished this education, and above all, you have a DICCI, which is called always a stop shop. Community, you don't go anywhere. You did not go anywhere. This we have proved in Karnataka and Telangana, of course. Already they have created hundreds of success stories here. So with all these things, I think nobody disappoint, and anything, we are always there to support you all and be an entrepreneur. Yeah. We want everybody from the community to at least be just a gar flag hoist किया था हमने. घर घर दलितों के घर में entrepreneur होना चाहिए. So with that, saying that, thank you very much. Jai Bhim once again. Thank you so much for the inspiring words, Rajanaik sir. I would also like to extend my greetings to all the chapter presidents present here, and also all the people traveling across country. Welcome all of you. Now I would like to call our I would also like to call Nalla Saudharan sir to say a few words. President South End. Good
Evening, everybody. I congratulate first the young gen for DICCI. I am very happy to attend this meeting because you are a very lucky person. We are in your age, the chance not get us. Always we are back with you. You come forward very short period. Actually, in our career, I am very happy. That's why breathing is good. So, um, really we are uneducated. So without the paisa, we have start business. So 35 years struggle, we are reaching 100 crore very near. At the time, no support, no background, even though no computer, no cell phone, nothing, no education. Okay. Now you have all facilities you have. We are our backside. Very short period, within 10 years target, you should come, everybody's near 100 crore business. That is my wishes. Thank you very much for it. So I have 3 daughters. So I started first in 85 in petrol bunk. That is the first petrol bunk in Pondicherry, first businessman in Pondicherry. After I started then real estate, then agriculture based units, everything. So I have 3 daughters. After finish, all daughters start up business only. This meeting, they are not able to come because of various reasons. So first daughter concentrated on our resort in Pondicherry. She studied in Switzerland, hotel management, 3 years. Second daughter studies London. One course after computing, he took over our business. So we are not educated. That's why our aim is our children want to educate over a high level. That's why the world first hotel management college in Switzerland. That is our first. So we are joined there. They study, they take over the business fully. Now she turnover 25 to 30 crore per annum. So second daughter also the same like she concentrate our business petrol bunk. They want to more petrol bunk. That's why I purchased another 2 petrol bunk. 8 crore on petrol bunk, another 5 crore on petrol bunk. Total 3 petrol bunk I hand out to her. She earning 30 crore near. So agriculture business, my wife concentrated. She is also earning. We have huge mushroom plant is there, butter mushroom. That is a 20 crore project. Now earning a lot of money there. That is everything. Without any help in ourselves, we are create a lot of failure, a lot of lesson after only able to success. But you are a very lucky person, and before I told you, know, so always we are your backside. You come forward very quickly, definitely. That is our happy, because our age is now 60, 61 going. So why I tell you very short period come to forward, come to Crorepati, we want to show you 100 crore worth per very short period. So don't take more time, very positive, very quickly to earn more money and come forward. So I kindly request, so South India side, Pondicherry side, we are in a small place in Pondicherry.
That is a tourist best place in tourism best place in Pondicherry. So please everybody come and enjoy our resort. So I request you. Yeah. So I kindly request Maitreyi, next meeting organized in our resort in South India. Done, sir. Done. Yeah. Yes, yes, yes. We would like to have taste So of the French culture is chili. different. That is, we are in French adaptation place. Our parents, we are in a sleeve of French nationality. Now they are earning a lot of money. So very beautiful resort with the swimming pool and beach front. Yeah, last week Naik told because Pondicherry government is announced the casino shipyard. So they are not allowed to ground because casino India government not allowed to our India flooring area. Throughout the world they are allowed only. Yeah. So they are allowed only sea level. Only 20 nautical mile they are allowed only. That is the international border. The international border is India law are not allowed. That's why he planned to purchase one small ship and start. Yeah. He spoke to me. So very soon we are going to get license through Governor. Telangana governor is in Pondicherry governor now. So through her, we are going to Tamil is Soundarajan. Is the name my name. So very short. So anyhow, we are our top struggle in our life. So we don't want that kind of trouble to you. That's why always the chairman, Ravinara, Raj Naik, the whole story, a lot of stories, but time is not available. So next meeting, elaborately we can speak. You don't worry. You think, start business, very short period, because now market is a very competition market. So don't waste your time. When the time is goes, that is in our period, no competition. So problem also more, no competition, not a lot of chances. But your time, very short, lot of competition, business terms is changing. As you start your career very quickly within short period, 10 years. I want to next gen minimum 100 people reach above 50 crore. You make list individually what kind of business they are planning, what proposal, how they are going to run. This is everything. When we are starting at the time, even though one paisa not get loan from government side, any side. That kind of not now your line, but you are your best period. You start, you achieve yourself. Okay. Thank you very much. So much, sir. I would like to call P.K. Sudhir, sir, Vice President, South India. And I would just ask for a small favor that if you can just cover up in 1 minute time, as we are running very late. And after this, Dr. Rajesh Paswan, sir, also. I am not able to spot him. Good evening. I have only 1 minute allotted by our next chief, So actually, I don't even require 1 minute. What you are waiting for? If you want to do business, just Google Raj Naik. You will get the entire story how you struggled and what is the status now. And of course, you know that our kingmaker, our Nara sir, and we have NextGen, So
You don't have to worry for anything. No, you are all educated, you know. Then what do you want? You want money, you know? Money is already provided by DICCI. The chairman is here. Now, if you go to bank through Stand Up India, go online and you get it done. You know? If any reason, just approach NextGen. She's ready to support you. Thank you all. You know, I'm from Kerala and my team is with me. And, so we had a very good opportunity. The kind of approach from the Telangana government we had, we experienced something today, and that is what. Thank you all. Right. Thank you so much, sir. Dr. Rajesh Paswan, sir. आप सबको जय भीम। मैं डॉक्टर राजेश पासवान, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जेएनयू में। मैं कम से कम 2 घंटा लेक्चर देता हूँ, लेकिन मैं अभी 1 मिनट में दूंगा और मैं बाद में आऊँगा 2 घंटा लेक्चर देने के लिए। लेकिन एक मैं जरूर कहूँगा आज के इस दिन में कि एक सपने को सच होते हम लोगों ने देखा है और हम सब लोग शुरू से उस सपने के साझेदार रहे हैं। बहुत समय में जब इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में, तो हो सकता है संभव नहीं है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं 2022 में कि न सिर्फ संभव है बल्कि एक देश विदेश में एक नया माइलस्टोन सेट किया है डिक्की ने। और नेक्स्ट जेन की शुरुआत वैसे ही होती है जैसा पिछले दिनों नारा सर ने कहा था कि हम 17वें या 18वें साल में हैं, तो हम एक नए बेबी को, जैसे पिछली जनरेशन के जो बिजनेसमैन है वो एक नए बेबी को एक गार्जियनशिप दे रहे हैं और नेक्स्ट जेन के रूप में एक नई जनरेशन आ रही है। आप सब लोगों की वो नई जनरेशन है, इसको गाइडेंस देने के लिए, जिसके बारे में नायक सर ने कहा कि उन्हें कोई गाइडेंस उपलब्ध नहीं था। आप लोगों के लिए बिजनेस चैलेंजेस भी हैं, गाइडेंस भी है, संरक्षण भी है, बहुत सारा तो चीजें आप लोग और बेहतर करेंगे, जिसके बारे में अभी नल्ला सर ने बताया, नायक सर ने बताया, उससे और कई गुना बेहतर आप लोगों को परफॉर्म करना है, क्योंकि आपका बहुत अधिक सेफ पोजीशन भी है, बहुत सेफ गार्ड्स भी हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट भी हैं। इसी के साथ शुक्रिया। Thank you so much, sir. Now I would like to call Padma Shri Ravi Kumar Nara sir to say a few words. आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सुरेंद्र मनुस्कोस्कर जी और डिक्की के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले जी, देश में पूरे जो यंग जनरेशन के एक एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में मिलिंद जी जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट ही आप लोग आज पूरा यहाँ इकट्ठा है। और मेरे साथी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राजा नायक जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट संजीव डांगी जी और नेक्स्ट जनरेशन के विंग के नेशनल कन्वीनर मिस मैत्री कामले जी और स्टेट के कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार जी और पूरे साथियों को मेरा प्रणाम, जय भीम। सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि नेक्स्ट जेन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज की दुनिया आप इंटरनेशनल लेवल से देखो या इंडियन लेवल से देखिए और कौन सा भी एंगल से देखिए, और हर एक जगह जो सिचुएशन है बदल रहा है। एक जमाना था यहाँ भी एनटी रामाराव, चिरंजीवी, नागेश्वर राव, कृष्णा, ऐसा लोगों का सिनेमा चलते थे, लेकिन आज के तारीख में वो लोगों का पिक्चर कंप्लीट फेल हो रहा है। किनका पिक्चर सक्सेस हो रहा है? हाँ? जिस पिक्चर का सब्जेक्ट यंग जनरेशन के लिए है, जिस पिक्चर में यंग सिनेमा हीरो है, जिस पिक्चर में यंग हीरोइन है, उन्हीं का सिनेमा अभी चल रहा है। इसका मतलब है कि
ट्रेंड चेंज हो रहा है, वैसा ही बिजनेस में भी हो रहा है, हर एक फील्ड में हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, सभी में। लीगल प्रोफेशन में तो मेरे मित्र सब बहुत है, मैं भी कर रहा था। हम तो बाल को सफेद कर लेते थे, क्योंकि क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस होना कि इसको एक्सपीरियंस है, तो अच्छा पुराना वकील तो अच्छा सब्जेक्ट रहता है। लेकिन वो जमाना चले गया, अभी पुराना वकील करने कोई नहीं जा रहे, अभी कारपोरेट वकील चाहिए, दे वांटेड कारपोरेट। डॉक्टर्स भी जो 30 इयर्स पहले जो पढ़ा है डॉक्टर, वहां गए तो ये सारा पुराना सब्जेक्ट ही है। लेकिन जो डॉक्टर्स रहते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले। वैसा ही जो कंप्यूटराइज आईटी लेवल में, ये सब में, वो सब छोड़ के हर एक घर में आज किसका आवाज चलता है? हा? आपके घर में किसका हवा चलता है? आपका पिताजी का चलता, माताजी का चलता, या आपका चलता? बताइए, आपका ही चलता है ना। तो दुनिया पूरा ऐसा बदल गया है। अभी हमने चेयरमैन साहब और हम लोग परसों एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे थे। इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है यंग पीपल का दिल्ली में, तो एक 30-35 लोग आए थे। तो उनको हमने डिक्की का दिल्ली ऑफिस दिखा के, तो वहाँ उतना स्पेस बैठने का नहीं रहता बोल के एक होटल में लेके जाके उनसे इंटरेक्शन प्रोग्राम लगाया। वो प्रोग्राम को दिल्ली में जो यंग पीपल है वो लोगों को भी हम इनवाइट करें। तो मीटिंग हो गया। मीटिंग होने के बाद में वो मीटिंग में अलूफ या दो बेकार आदमी कौन थे बोले तो हम दो ही थे, मिलिंद जी और क्योंकि हमारे से बात करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि पूरे यंग बच्चे मिल लिए, वो लोग बात कर रहे हैं। हम दोनों तो लिटरली ऐसा ही डैश पे बैठ के देख रहे पूरा दुनिया। तो अभी यंग जनरेशन को लीडरशिप दिए तो हमारा हालत तो हालत हो गया। So everywhere the change is happening. मगर वो चेंज को अगर if you are unable to channelize and if you are unable to focus, then you will also become the outdated. तो जो वो फ्लावर जो रहता है, ये फ्लावर का लाइफ कितना रहता है? 1 दिन का है, 2 दिन का है। वैसे आपका यंग एज भी जितना ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। वो ज्यादा दिन, जितना दिन वो रुक सकता है, या 5 साल या 10 साल जो भी आपका है, उस पे आप आपका करियर बनाना है, उसके ऊपर ही अपने फ्यूचर बनता है। आप तो 20 साल तक तो मिनिमम तो पढ़ना पड़ेगा, डिग्री तक, ठीक है। तो 20 साल के बाद में आप आपका करियर स्टार्ट करेंगे, चाहे वो ड्यूटी करते हो या प्रोफेशन लेते हो, मेडिकल या कुछ भी करते हैं या बिजनेस करते हैं। आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आपके पीछे से नेक्स्ट जनरेशन आते रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकते। दैट मीन्स एक हम फेड हो रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, फिर आपके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आएगा। ये तो लाइफ का साइकिल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मगर थोड़े लोग रोक सकते हैं जो हमेशा अपडेट होता है। अपडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरे को, मैं फोन खरीदता हूँ, मगर वो फोन को मैं कैसे यूज करना मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा बेटा अच्छा मालूम, और मेरे बेटा से भी ज्यादा जानकारी और उनके बेटा को रहता है, बिकॉज ऑफ द जनरेशन। अंडरस्टैंडिंग में जो यंग बच्चे जो अंडरस्टैंड करते हैं, उतना स्पीड दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो मेरा
एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों को, यहाँ किस वजह से आए हैं, क्या है, सब तो मेरे को नया फेसेस तो दिख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, नंबर 1। लेकिन आपके सोच किस तरफ है, ये आप लोगों में कितने लोग बिजनेस स्टार्ट करना बोल के यहाँ है, हाथ उठाओ। चलो, कितने लोग आपके पेरेंट्स के साथ में आए हैं? यू केम विथ योर पेरेंट्स। अच्छा, यू आर ऑल टिक्की का है बोल के वैसा है, चलो ठीक है, एग्जम्प्टेड because they also must participate in this meeting. So business is such a thing. अभी आप दोनों लोग का हिस्ट्री अगर आप देखें, वो वहां से शुरू करते वो संजीव डांगी साहब। संजीव डांगी साहब जयपुर में जो महारानी जी है, क्या नाम है, वसुंधरा देवी। वसुंधरा देवी इज ए नेबर टू संजीव डांगी। उनके घर, इनके घर अड़ोस पड़ोस में रहता है। आप इमेजिन करिए क्या ताकत है उनकी। एंड ही ओन्स सेवरल बिजनेसेस। और वो कौन सा स्कूल में पढ़ा मालूम है? मायो कॉलेज। सुने आप? मायो कॉलेज। मायो कॉलेज इज नॉट ए कॉलेज, इट्स ए स्कूल। इट इज नेम्ड एज ए कॉलेज। वहां सिर्फ राजा महाराजा लोगों का बच्चों को पढ़ाने के लिए एस्टेब्लिश करे सो स्कूल है। वो स्कूल में पास आउट है। आईआईटी में पवाई मुंबई में से ऐसे क्वालिफाई हुआ है। आज का तारीख में बहुत सारे बिजनेसेस चलाते हैं एंड इज आवर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। हमारा यंग टीम में अभी हमारा पूरा शिक्षा वही देता है, वो हमारा कंप्यूटर वो सब समझ में नहीं आता, वही हमारा टीचर है कंप्यूटर। और नेक्स्ट राजा नायक जी, आप देख रहे हैं उनके घर में 5 पीपल है। उन्हें, उनका मिसेस और 3 बेटे। 5 लोगों को 5 बिजनेसेस है, कोई बेकार नहीं है, और वो भी बड़े बड़े बिजनेसेस है। एंड एवरीबडी हैज गॉट वन कार, डिफरेंट BMW, मर्सिडीज बेंज, आरडी, ये टाइप के कार गाड़ी है। इज नॉट एजुकेटेड। और ये हमारे सौंदरराजन जी जो बात कर रहे हैं, उनको भी 3 डॉटर्स है। 3 डॉटर्स को हर एक को एक बिजनेस है, उनका मिसेस को एक बिजनेस है, उनको भी खुद का एक। तो एंटरप्रीनियरशिप इज द सच ए थिंग। अगर आपके पिताजी, इफ ही इज एम्प्लॉयड, इवन इफ ही इज एन IAS ऑफिसर, कैन यू गेट हिज बिजनेस? कैन यू गेट हिज रेजिग्नेशन टू यू? कैन यू ट्रांसफर हिज जॉब टू यू? బదలావ్ कर सकता है? వస్తుందా వాళ్ళ వాళ్ళ జాబ్ మీకు వస్తుందా? కానీ ఒక వ్యాపారస్తుడు ఆయన వ్యాపారాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతాడు. సో బిజినెస్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫరబుల్ టు యువర్ నెక్స్ట్ generation, not the job. And job has got all limitations. And nowadays there is no recruitment. ना गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट बंद कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो बैंक्स, public sector undertakings. So those were the days where the jobs were created and a lot of vacancies were there at that time. But now the more people are qualified, but there are no jobs at all. So in these circumstances, what is the option before all of us? क्या option है? Next option.
एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली अपॉर्चुनिटी। तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज भी है, लेकिन सक्सेस हुए तो उससे मजा यू कांट, वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं, जो लेवल का लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हम लीड कर रहे हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स भी उतना लाइफ लीड नहीं कर सकते, क्योंकि अनलिमिटेड है यहाँ। यू नीड नॉट कन्फाइन टू वन बिजनेस, यू कैन डू 10 बिजनेस if you have the capacity of managing it. And everything multiple lines पे जा सकते हैं. You need not restrict to one line of activity. One can do many sectors of businesses. तो ऐसा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी रियलाइज करने के लिए डिक्की का माध्यम से अभी 2005 से जो मिलिंद जी के नेतृत्व पे हम सब काम कर रहे हैं, एक बड़ा इकोसिस्टम हमने खड़ा कर दिया है। तो स्काई इज द लिमिट इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपको रिसेंटली लास्ट अप्रैल 14 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने they have celebrated Dr. Ambedkar birthday as the year of innovation and entrepreneurship. For the past 74 years, they were celebrating Dr. Ambedkar birthday as by distributing the sewing machines or by distributing the artificial limbs. But first time, because of the DICCI's intervention, the government has changed their mindset and now they have celebrated the year of entrepreneurship and innovation. And they have, on that day, they have recognized around 75 people with a grant of 30 lakh rupees under the scheme called ASIM. That is Dr. Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission. So if you have a startup idea, if you have a very good idea, innovative idea, you don't have a money, so you can apply for that. The IFCI Venture Capital Fund will give you 30 lakhs rupees grant, 10 lakh rupees per year, like that, 3 years, within 3 years, they give you 30 lakhs rupees to formulate your idea into business, to make a prototype unit, and all your expenses, including travel, stationery, everything they are going to reimburse under that scheme. That is ASIM. And after getting your business idea closure, business model is developed, then you are going to get a loan up to 15 crores without any collateral security at the rate of 4% interest from IFCI. So like that, various subsidies options. Every state government has got a different policy. State Telangana has a different policy, AP has a different policy, Maharashtra, Karnataka, Gujarat. Like that, in every state, there is exclusive policies has been created. Stand Up India scheme is there to get the finance up to 1 crore without collateral. So like that, the ecosystem has been created because of the efforts of the DICCI. As the earlier speakers also told, at the time when we started a business, nobody was there. There was no DICCI at that time. There is nobody to advise us. There was no exclusive policy at all. There is no reference at all. In fact, everybody was laughing at us. But somehow we could able to succeed in the life. So like that, you people are in a better position. And the market is open now. దున్నేవాడిదే భూమి అన్నట్టు ఎవడైతే కష్టపడి పనిచేసి వ్యాపారం చేస్తాడో వాడే సక్సెస్. అటువంటి అవకాశం మనకున్నది. तो आज के तारीख में आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर चुके हैं और आपको जो भी चाहिए, जो भी सपोर्ट सिस्टम करने के लिए हम तैयार है.
और जो डिक्की का मकसद यही है कि नेक्स्ट जनरेशन कंप्लीटली दे शुड डिवोट टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप and it must be a economic revolution. This is the economic revolution of the country itself, because we are not telling that we are working for the scheduled caste and scheduled tribe people. We are the part of this nation, and in the nation, our population is 25% of the population we are representing, and this 25% population, if that economically empowered, the nation will automatically become the richest country. So we wanted to become the taxpayer. We wanted to become the job givers. So that should be our motto. So with that motto, you think there are many things, many new business trends are coming. You just go through that. And if you want any experience guidance from us, we are ready to do that. And this is the pre-launch meeting, and the final launch date, your team has to decide, because what we are logically, and we are going to support you in all aspects. And at the same time, we are not going to interfere in your administration. It is all powers we wanted to give, because we are very confident that you people are more intelligent than us. We have such confidence. So for that, you plan, and it should be the historical launch. It is going, that launch must be discussed by every citizen of this country. In that fashion, we should. So how you want to do all that, you plan. We are ready to support all of you. And here there are many young entrepreneurs who have come from different parts of the country. So if your time permits, you can also interact if you have any businesses. Already businesses anybody is doing? You are. Your number is also very high. Okay. Then वही सक्सेस स्टोरीज ठीक है, नेक्स्ट टाइम. But all of you have to give the information. You have filled all the names in the register. That register has reached everywhere. Where is that register now? Yeah, make it fast. So thank you very much for the opportunity. Thank you so much, sir. And definitely we assure you that we will have the launch as you have suggested. Now I would like to call Shri Surendra Mankoskar, sir. Sir is IRS and Commissioner GST in Hyderabad. Respected Milink Kamreji, today we completed 40 years of friendship. Today is 1st September 2022. We became friends in 1st September 1982. We did dip engineering together. लेकिन I can proudly say that 40 years back उसके आंखों में जो चमक थी आज भी वही है. National President of the DICCI, National Vice President संजीव डांगी जी इंसिडेंटली हमारे जीजा जी है, क्योंकि उनकी भी वाइफ हमारी तरह कमिश्नर है. मैत्रेयी, एक दोनों भाभी जी और एक डैशिंग दिनेश नायक जी आए थे. उनको देख के मुझे एक दिन का वो नायक आया था जिसमें नायक थी सुरेश नायक. माय फ्रेंड्स, फर्स्ट पुल अप योर सॉक्स. मैं 3 चीजों में बोलने वाला हूं. पहली चीज व्हाई नेक्स्ट जेन, बराबर है. दूसरा नेक्स्ट जेन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, और तीसरा आपको करना क्या है. These 3 things are there, बराबर है. अब पहली चीज कि व्हाई नेक्स्ट जेन. आप अभी तक देखो कि अकबर सबसे बड़ा राजा बना, औरंगजेब सबसे बड़ा राजा बना, लेकिन उसके बाद उनके कोई
जनरेशन इतनी पावरफुल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अकबर बना राजा 13 साल की उम्र में, औरंगजेब 93 साल तक रहा। जब वो 93 के बाद उसने जब सत्ता छोड़ दी, तब जो सो कॉल्ड बेटा था बहादुर शाह, वो ऑलरेडी 67 ईयर का हो गया था। और हम लोग 67 ईयर के लड़के को अभी भी प्रिंस मानने को तैयार नहीं है। कब कुर्सी छोड़नी चाहिए ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है? व्हाट इज द टॉप मोस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ? एक ऐसा डिसीजन बताइए जिसका लेने के बाद लाइफ में कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा डिसीजन? शादी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले भारत मैट्रिमोनी था, फिर शादी.com आ गया, फिर सेकंड शादी.com भी आ गया। ऐसा एक डिसीजन बताइए। बिजनेस बराबर है। पहले हमारे जमाने में भाभी जी याद होगा, एक टीवी, एक रेडियो, बराबर है, एक घर। एक आदमी आया कबीर मूलचंदानी, आपकी तरह ही डैशिंग, उसने बोला आप पुराना टीवी दे दो, नया टीवी लेके जाओ। एंड नाउ सी एवरीथिंग हैज चेंज्ड। इट हैपेंस इन इंडिया में एक आदमी आया, बोला रद्दी दे दो, टीवी लेके जाओ। इट हैपेंड। इंडिया को राज कभी भी अंग्रेजों ने नहीं किया। ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, बराबर है। फ्रेंच आया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई थी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमें उन्होंने गुलाम बनाया था, आज ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड इंडियन है। इट हैज बीन परचेज्ड बाय वन इंडियन पर्सन। इंडिया, ये वर्ड ही ऐसा जादुई है, सबसे बड़ा मार्केट। रशिया का वार होने दो, कुछ भी होने दो, यहाँ हर चीज बिकती है, हर चीज बनानी पड़ती है। इतने सारे हैदराबादी बिरयानी होने के बाद भी आज भी मैं राजा नायक साहब को बोलने वाला हूँ, सबसे अच्छा बिरयानी किधर मिलती है? इंडिया इज सच ए ह्यूज मार्केट। अब ह्यूज मार्केट को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले डिसीजन लेना आना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है? पढ़ाई? कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जब हम लोग 82 में साथ में मिले थे, तब 8 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। यहाँ के सब वरंगल से, करीमनगर से सब लड़के उधर पढ़ाई करने के लिए आते थे, इंजीनियरिंग की, बराबर है। यू सी द अपॉर्चुनिटी। एक 4th स्टैंडर्ड पास चीफ मिनिस्टर था, जिन्होंने ये कैलकुलेट किया कि बाय 2000 इंडिया नीड्स 1 लाख इंजीनियर पर ईयर। 1 lakh engineer per year, where we were producing only 1600. See the vision. See the vision of my friend. He was very clear कि 25% हम लोग रिजर्व है ना, we will give job to 50% of the population. That is real freedom. That was his vision. He united you all. He created DICCI. But the next vision is Gen Next. तो अभी भी आपने नहीं बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है। शादी तो डेफिनेटली नहीं है। बिजनेस पहला भी हो सकता है, दूसरा दिस। आई एट द एज ऑफ 20 ज्वाइन एज एन इंजीनियर इन प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद मैं एसी सेल्स टैक्स बना, उसके बाद मैं डेप्यूटी कलेक्टर बना। लातूर में भूकंप आया था, मुझे याद है, एट द एज ऑफ 22 मैं इंडिया का पहला आदमी था जो मेरे कलेक्टर के साथ सैटेलाइट फोन यूज करता था। आप लोगों ने तो मोबाइल फोन देखा होगा, मैंने तो सैटेलाइट फोन भी देखा। उसके बाद मैं IRS आया। Then I did my engineering, I did my law, I did my costing, I did symbiosis। हर जगह घूमता रहा, सोचता रहा लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है। What is the important decision of life? Exactly 50 दिन के पहले मुझे पैरालिसिस हुआ था। I was bedridden, बराबर है। एक ही सवाल आया, अगर वेंटिलेटर निकालना है तो परमिशन कौन देगा? That is the perfect decision of the life. वो डिसीजन मैं नहीं ले सकता। मेरा वेंटिलेटर एक ऐसा डिसीजन है कि वो निकालते, अनिल साहब का वेंटिलेटर निकाला होगा एंड इज नो मोर। वो डिसीजन ऐसा डिसीजन है कि उसके बाद कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। वो डिसीजन लेता है जेन नेक्स्ट, वो लेता है आपका बेटा, आपकी बेटी। और आप उनको डिसीजन लेना ही सिखाते नहीं। आज भी उन्होंने पूछा कि किसके साथ पेरेंट आए। आओ पेरेंट आर रिक्वायर्ड, दे आर द फर्स्ट गुरु। अब गुरु की भी अहमियत क्या है? अब देखो जेन नेक्स्ट में आदमी जन्म से बड़ा होता है या कर्म से? किससे बड़ा होता है आदमी? अगर जन्म से बड़ा होता तो कोई प्राइम मिनिस्टर अलग होना चाहिए था। कर्म से बड़ा हो गया तो कोई और हो गया है। 3 आदमी थे सबसे धनुर्धर अच्छे। एक अर्जुन,
एक करण और एक एकलव्य। एकलव्य आदिवासी था, अर्जुन और कर्ण भाई थे। अगर जन्म से बड़ा होना तो अच्छा धनुर्धर कौन सा होना था, अर्जुन या कर्ण? लेकिन तीनों अच्छे धनुर्धर थे क्योंकि गुरु उनका महान था, एकलव्य। इंसान को सबसे पहले जेन नेक्स्ट को यह ढूंढना है, आप अपना रोल मॉडल ढूंढो। रोल मॉडल में भी मिलिंद, रोल मॉडल में भी प्रेसिडेंट, रोल मॉडल में भी वाइस प्रेसिडेंट, एनीथिंग। जब तक आप गुरु नहीं करोगे, भले कोई गुरु आपको तैयार नहीं होगा। मैं आपको एक सक्सेसफुल लड़की की स्टोरी बताता हूँ। सोलापुर की लड़की थी, शी वांटेड टू लर्न सितार। ऐसा ही फंक्शन हुआ, 45-40 साल पहले की बात है, कि रविशंकर, पंडित रविशंकर कहा कि मुझे सितार सीखना है। उन्होंने कहा मैं लंदन में, तू शोलापुर में, हाउ यू कैन लर्न, इट्स नॉट पॉसिबल। बोले, उन्होंने ऑटोग्राफ लिया। फिर और जगह प्रोग्राम हुआ, वहां पर गई, वहां पर भी रिक्वेस्ट किया। उस लड़की ने 70 ऑटोग्राफ कलेक्ट किए। एंड देन रविशंकर बोला, मैं अपने पैसे से इस लड़की को लेके जाऊंगा एंड आई विल टीच हर कैसे सितार बजाते। शी बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सितार। जब रशिया का यूथ फेस्टिवल हो रहा था तो 56 देश के प्रधान उसके सितार पे सर हिला रहे, क्योंकि उसने सही गुरु कहा था। गुरु पिता भी हो सकता है, बराबर है। अधिकांश लोगों में पिता गुरु होता है, लेकिन पिता और बेटे के रिलेशनशिप को जनरेशन गैप माना जाता है। जनरेशन गैप कोई नहीं होता। अभी मैत्रेयी बैठी है और मिलिंद जी बैठे, दिस इज द 2 जनरेशन। मैंने 35 साल में सिर्फ एक छोट बनते हुए देखा है, और अमीर आदमी को छोटा बनते हुए भी देखा है। एक ऐसे आएगा कि ये कुछ नहीं थे लेकिन आज सब कुछ है। एक आदमी पूना का लड़का था, एवले, सबसे इजी टू ऑफर इज टी, सबसे इजी टू ऑफर टी। और हम भी अभी भी ढूंढते हैं अच्छा चाय कहाँ मिलता है। हैदराबाद के लोग तो चाय के बड़े क्रेजी होते हैं। इसने चाय क्लीन और बढ़िया बनाने के लिए कंसेप्ट खोला, एवले चाय। सब जगह आ गई, आपके पास भी होगा, भी चाय कट्टा वगैरह ऐसे अलग अलग आ गए। लेकिन लोग यहां तक नहीं रुके। अब एक लड़का मुझे मिला, उसने बोला कि साहब मैंने 50 ई स्कूटर लिया है, 50 ई नया थर्मास बनाया, लोग मुझे मोबाइल में चाय का ऑर्डर देते हैं, मैं उनके घर पहुंचा देता हूँ। आई हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 50। दैट इज द क्रेज। मैं खुद खड़ा रहूंगा नहीं, मैं किसी और को खड़ा करूंगा। दैट शुड बी योर इमेज। उसमें गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन जेन नेक्स्ट को यह भी याद रखना है कि गुरु ने इतनी मेहनत की तो उसकी परंपरा कायम रहनी चाहिए। आपको 3 स्टूडेंट बताता हूं, सचिन तेंदुलकर, प्रवीण आमरे, विनोद कांबळे। तीनों का गुरु एक ही था, रमाकांत जी आचरेकर। उन्हें भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। जनरली गुरु को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता, लेकिन तीनों में सक्सेसफुल कौन रहा? क्योंकि सचिन तेंदुलकर रहा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का गुरु एक रमाकांत आचरेकर और पिताजी थे। अपने पिताजी गुजरने के बाद भी 24 घंटे में वर्ल्ड कप खेलने गया, और जब उसने 100वां शतक भी मारा तो आकाश में देख रहा था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक फुटबॉल की टीम होती है, फुटबॉल टीम में एक प्लेयर हमेशा रिजर्व में रहता है। उसने एक दिन कहा कि मुझे मैच खेलनी है, मेरे पिताजी मैच देखने आने वाले हैं। तो उसने बोला ठीक है, दिन खिलाया, अभी तो हम हार ही रहे हैं, तो चलो आपको लेऊंगा। एंड ऑन दैट डे ही डिड वंडरफुल गेम। उसने अकेले ने 5 गोल बना के मैच जीता। मैच जीतने के बाद वो कोच बुलाया उसने, यू हैव डन वेरी गुड जॉब, बट टेल मी व्हाई यू लाइड। एवरी डे यू वर एंड डूइंग प्रैक्टिस विद अस। हर दिन आप अपने पिताजी को लेके आते थे, प्रैक्टिस करते थे। आज ही तेरे पिताजी नहीं आए तो तू क्यों बोला कि मेरे पिताजी मैच देखने आए? उसने सिंपल से जवाब दिया, सर मेरे पिताजी जन्मांध है, वो कभी नहीं देख सकते, तो मैं मैच प्रैक्टिस करते समय लेके आता था। कल वो गुजर गए, आज वो जरूर ऊपर से मुझे देख रहे होंगे। ये होता है बाप बेटों का, माँ बेटों का एक रिलेशन। जेन नेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि हमें वृद्धाश्रम में भेजना है, हमें वृद्धाश्रम को स्पॉन्सर करना चाहिए, तो जेन नेक्स्ट सक्सेसफुल होगी। तो आपको मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या, वो डिसीजन लेने के आप लायक होने चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के डिसीजंस फट जाते हैं। अब रही बात कि अगर नेक्स्ट जेन के हाथ में मैं दूं तो मेरा क्या होगा?
इसी चीज में पॉलिटिक्स में भी आपने हिस्ट्री देखी होगी, बहुत सारे बेटे बाप धृतराष्ट्र बन जाते हैं, आंखों में कुछ नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी वो चलते ही रहते हैं, बच्चों को कुर्सी नहीं देते समय पर, बराबर है, लेकिन समय पर बच्चों को देना चाहिए और हमारे लिए खुद की जिंदगी भी जीना चाहिए। मैं अभी एक सिनेमा बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक मराठी थीम थी। अब जिनको भाभी जी को मराठी आता है तो मैं मराठी बोलता हूँ, उसको हिंदी ट्रांसलेट भी करता हूँ। उसमें एक लाइन लिखा था, दो, एक बुढ़िया और एक बुढ़ा आदमी बैठा है पार्क में, नीचे लाइन लिखी थी, आयुष्याच्या संध्याकाळी लक्षात आलं की बायकोवर प्रेम करायचं राहूनच गेलं। यानी उसका मीनिंग होता है, लाइफ के इवनिंग में पता चला कि बीवी से प्यार करना रह गया। हस्बैंड एंड वाइफ इज सच ए ब्यूटीफुल रिलेशन, बट हम सब लोग इतनी है बीवी से प्यार करना रह जाता है। और वो किबे साहब का थिएटर था, मैं आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, आई वेंट टू दैट पोस्टर एंड मैं बीवी कट कर दिया और लिखा स्वतः। एट द एंड ऑफ लाइफ, बराबर है, हमें खुद पे प्यार करना नहीं आया, हमने कभी खुद की चिंता ही नहीं की। आज साहब का 60वां बर्थडे है, कितनी बार आपने अपने बारे में सोचा होगा और कितनी बार बच्चों के बारे में सोचा होगा, जबकि आप दोनों के उद्देश्य एक ही है। आप क्या चाहते हो? बच्चों को बेस्ट कॉलेज, आप चाहते हो बच्चे का हेल्थ अच्छा हो, आप चाहते हो बच्चा सबसे बढ़िया पढ़े, बढ़िया बिजनेस करे, सोसाइटी में उसका अच्छा नाम हो, 25 साल तक पढ़ा, 30 साल तक अच्छा जॉब या बिजनेस हो, 40 साल तक शादी और बच्चे हो, 50 साल तक हेल्थ ना है और समाज में हमारा अच्छा नाम है। आप यही चाहते, बराबर है? यू ऑल्सो वांट द सेम थिंग, यू वांट वेरी गुड एजुकेशन टिल 25, बेस्ट जॉब और बेस्ट बिजनेस एट द एज ऑफ 30, बेस्ट मैरिड लाइफ एट द एज ऑफ 40, बेस्ट सोशल नेम एट द एज ऑफ 50, ये भी वही चाहते। तो फिर काहे का जनरेशन गैप? टुगेदर 1 और 1 11 होते हैं। आप क्या चाहते हो? आप अपने पिता के साथ बैठो कि मैं ये करना चाहता हूं। हमेशा पहली आइडिया हमेशा फुलिश होती है। आपको मैं कई बिजनेसमैन को मैं लाइफ में मिला। आई रिमेंबर वंस मिलियन हैड कम टू माय ऑफिस इन पुणे। एक आदमी आया था, एक बुढ़ा सा आदमी, उसके पीछे 5-6 गन लेके आए थे। मैं स्माइल दिया उसको, बोला यार आपको इतने बुढ़ापे में इतने गन की क्या जरूरत है? वो बोला सब मेरे पीछे लगे हैं कि मेरा प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं। आपको मालूम है उसका प्रोडक्ट क्या था? लाइसिल, जुआ मारने की दवा। ऑन ऑल टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट वांट टू टेक ओवर दैट ब्रांड। तो कोई मेडिसिन नहीं है समय जो इस रहता है, उसका प्रोडक्ट वो गारंटी के साथ कह सकता है कि डुप्लीकेट बनता है, 100 करोड़ को दे ही नहीं सकता। कायम चूर्ण, परसों मैं मैच देख रहा था, उसमें कायम चूर्ण की एडवर्टाइज दिखाई। ऐसे कई प्रोडक्ट है। मैं जब छोटा बच्चा था, याद है मुझे, नांदेड़ में हर प्रोडक्ट का एक दवा मिलता था, हर दवा की एक दवा, जिंदा तिलस्मा। कई प्रोडक्ट है जो आप सोच सकते हो कि दे विल डू मिराकल। एक वॉल क्लॉक आया था अजंता, आज भी वही है, बराबर है? तो आप सोचो, हर नया आइडिया सोचो, अपने पिताजी माताजी के साथ बैठो, ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू। वी आर बॉर्न हियर टू गिव समथिंग। फिर उसके बाद अब ओल्ड जन क्या करेगी? यू लिव योर लाइफ। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं फादर टू अर्ली, तो मेरी माँ के कुछ एम्बिशन थे कि 2 लोग बेटे कमिश्नर करेंगे, 8 पोते डॉक्टर करेगी, सब कुछ हो गया। एट द एज ऑफ 68 शी सेड आई विल स्टार्ट माय सेकंड लाइफ। उसके दोनों ब्रेस्ट निकाल चुके हैं, दोनों नीज रिप्लेसमेंट हुए, फिर भी उसने एट द एज ऑफ 68 शी स्टार्टेड अ साड़ी शॉप इन लातूर। आज वो 40 बच्चों को जॉब देती है। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग, उसके इतने क्रिएटिव आइडिया होते हैं। उसने एक आइडिया निकाली, 15 मिनट में अगर साड़ी आप खरीदोगे तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। यू जस्ट इमेजिन। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट निकाला उसने, अपने पति को लेके आएंगे तो 10% डिस्काउंट। मैंने बोला ऐसा क्यों? वो कहती है कि पति आएगा तो 1000 की साड़ी 5000 की हो जाती है, एंड दैट इज रियल ऑल्सो, बराबर है? अब मैं अगर मेरे दोस्त को साड़ी दूंगा तो घर में उनके झगड़ा होगा, क्योंकि मेरा पति तो जिंदगी में कभी साड़ी नहीं लाया, आज कैसे क्या लेके आया? तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपने पत्नी को लेके आइए, भाभी जी को, फिर आप साड़ी ले लो। अब तीसरा उसने एक नया कंसेप्ट खोला ना, इट वाज अ शॉकिंग कंसेप्ट। राखी पूर्णिमा में अगर बहन के लिए एक साड़ी लोगे तो बीवी के लिए साड़ी फ्री। सिटी में किसी ने भी अपोज नहीं किया होगा, एंड देयर वाज अ बिग रश
चितेड़े की तरह हम रात को 9 बजे बोलते थे बस हो गया अभी, अब हमको बंद करने दो। एंड शी हैज सच एन एंटरप्राइजिंग स्किल एट द एज ऑफ नाउ शी इज 73। वो पहले एक बाहुबली की साड़ी आई, जो लोग 350 में हम खरीदते थे, लोग 700 रुपए तक बेचते थे। साड़ी का कंसेप्ट अलग होता है। अगर हम 24 साड़ी लेंगे, इस साल हो सकता है 12 ही बिकी जाए, अगले साल वो बचे हुए 6 होते हैं, अगले साल तो और 6 पुराने हो जाते हैं। यू नो, तो थर्ड ईयर में तो हमको डिस्काउंट में बेचना पड़ता है। शी यूज टू सेल 400 रुपीज साड़ी इन 385, और पड़ोस में दुकान में 700 रुपए थी। बोले क्यों, एक में मैं 15 रुपए लॉस लूंगी, लेकिन वो इतने लेडीज आएंगे यार, बाहुबली साड़ी 385 में मिल रही है, तो और 10 लोग लेके आते थे। दैट वाज गिवन गुड पब्लिसिटी। वो उस उम्र में भी बड़ी एंटरप्राइजिंग सोच सकती थी। आप तो बहुत यंग है, एंड व्हेन यू जॉइन योर पेरेंट्स यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल। सोचने का तरीका बदलो। अभी जैसे साहब ने कहा मुझे कि जीएसटी कमिश्नर भाई रेड करेगा। अभी जीएसटी जीएसटी क्या इंटरेस्टिंग है, मैंने तो देखा जीएसटी जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वर्ल्ड में कोई नहीं है। क्योंकि दो भाई अगर धंधा करेंगे और दोनों में आज ना कल झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी डिवाइड कर नहीं सकता, मुश्किल हो जाता है। बड़ा आदमी बोलेगा यार मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, छोटा बोलेगा इनको क्या आता था, मैंने पूरा किया। इस झगड़े में दो भाई बहनों में भी झगड़े शुरू होते हैं। हमको तो 30 स्टेट को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बिजनेस कैसा है, एक जमाना था कि आप लोग टीवी 10,000 रुपए में लेते थे। अभी जस्ट इमेजिन करो कि जहां बेचे हो वहां जीएसटी भरना है। मतलब केरल में बेचे तो केरल में जीएसटी भरना है, महाराष्ट्र में बेचो तो महाराष्ट्र में भरना है। अब देखो एलजी टीवी बनता है महाराष्ट्र में, रवि साहब बैठे हैं हैदराबाद में, इनकी बहन है पौंडीचेरी में, उनको पौंडीचेरी में 1965 vehicle over the 1965 vehicle number 1965. It is obstructing the building, so they have come. Anybody is there? 1965, please. सो जस्ट इमेजिन कि 10,000 रुपए में एक आदमी अमेजोन वाले एलजी टीवी लेता है, हैदराबाद में रवि साहब ऑर्डर प्लेस करते हैं, पौंडीचेरी में टीवी डिलीवर होता है। अब जीएसटी किसको मिलेगा, महाराष्ट्र को, हैदराबाद को, या तेलंगाना को? एक ट्रेन आती है जो निकलती है से फॉर एग्जांपल मैंगलोर टू बॉम्बे, कारवार में खाना पुटअप किया जाता है ट्रेन में और लोग खाते हैं महाराष्ट्र में। टैक्स कहाँ भरना है? अब सोचना शुरू करो, क्योंकि बिजनेस में पैसा ही है, टैक्स ही इंपॉर्टेंट है। एक पूना में एक बिल्डिंग बनी थी चोरडिया टावर, ट्रम्प चोरडिया टावर। इसके मालिक ट्रम्प और चोरडिया थे। ट्रम्प तो आप मालूम है कहाँ है आपको, चोरडिया तो है पुणे के। अब उस बिल्डिंग का सॉइल टेस्टिंग कोई जापानीज आदमी करता था, फाइनेंस बैंक ऑफ हांगकांग का था, कस्टमर मेजॉरिटी एनआरआई वाले थे, लैंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट किया गया था किसी ब्रिटिश कंपनी को। सब प्रॉपर्टी पुणे में बनी, तो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, टैक्स कैसे लगाए? स्वच्छ भारत की एक एडवर्टाइज देनी है, जैसे डिक्की के हमको एडवर्टाइज देनी है, हमने पूरे इंडियन एक्सप्रेस में दी, तो बॉम्बे में इतने एडिशन है, मैसूर में इतने एडिशन है, केरला में इतना एडिशन है, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगा? लेकिन आपने देखा होगा कभी इंडिया में इस बारे में झगड़ा नहीं हुआ कि हमको जीएसटी कम मिला। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट के हमको बिजनेस के 10 मिनट ज्यादा पहले सोचना पड़ता है। ये आदमी 10,000 रुपए में पुणे में एलजी टीवी ले रहा है और ये केरल में डिलीवर कर रहा है 7,000 में। हाउ ही कैन डू? व्हेन अमेजॉन यू कैन डू, देन व्हाई यू कैन नॉट डू? अमेजॉन ने, अलीबाबा ने पूरी एक अलग रिवॉल्यूशन क्रिएट की। फॉर मैं एग्जांपल देता हूं, रामदेव बाबा हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन द इंडियन बिजनेस अनडाउटेडली। रामदेव बाबा ने एक जल नीति का पात्र बनाया, प्लास्टिक का आता है ना, यहां से आपको नाक से पानी लेके यहां निकालना है, बराबर है? सो दैट इज नोजल वे, क्लीन होता है। अमेजोन में डाल के देखो कि जल नीति का पात्र स्टील का कितने में आता है। अब वो पात्र होता है 300 ग्राम का, 300 रुपए किलो पकड़ा तो भी कितना हो जाएगा, 90 रुपीज का। जब मुझे जल नीति पात्र लेना था, अमेजोन में ढूंढा, द लोएस्ट चीपेस्ट वाज 699। यू नो द बिजनेस, 300 ग्राम स्टील 699 में बिक रहा था, बराबर है? तो ये सब ट्रिक जो आप बिजनेस ट्रिक्स कहा जाता है, ये सबको आपको सीखना है, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे हमेशा यही लगता है
कि अगर हमारा दिमाग क्रिएटिव रहेगा, हम लोग अपने पेरेंट के साथ रहेंगे, उनके साथ मिलके एक अच्छा बिजनेस का आइडिया करेंगे, तो हम 50% क्या 70% लोगों को हम बिजनेस देंगे। लेकिन उसमें अब आपके नेक्स्ट जेन की कहाँ भूमिका है, क्या भूमिका हो सकती है, मैं बताता हूँ। मेरे मित्र एक वाघमारे हैं, उनके बेटे को एमएस ऑर्थोपेडिक्स मिला, हो गया भी एमएस ऑर्थोपेडिक्स, लेकिन उसको कभी ये नहीं बताया गया कि ऑर्थोपेडिक्स के बाद हॉस्पिटल कैसे बनाते हैं, हॉस्पिटल कैसे रन किया जाता है। मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स आर रन बाय अपर कम्युनिटी। हम लोग पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की, पुराने जनरेशन में, हमारे जनरेशन में ठीक है, हम नौकरी करते थे। आजकल के बच्चे वो नहीं थे। एट योर डोर स्टेप। अब जैसे डोलो का आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, एक मैंने रिसेंटली टैबलेट लिया, उसके ऊपर एमआरपी 197 था। एक जमाने में यही एमआरपी 17 रुपए थी। आज भी वो 197 में आपको यहाँ तेलंगाना में झगड़ा करते हुए दिखेगा। 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। यानी एमआरपी 197 और 60% डिस्काउंट देना मतलब रियल एमआरपी है क्या? दैट इज वन ऑफ द ग्रॉसली वायोलेटेड एक्ट इन इंडिया। इट शोज कि आप कितना ले सकते हो, कितना दे सकते हो, कहीं नहीं लिखा है। सो ये सब चीजों को आपको सोचना है। ट्राई टू बिकम क्रिएटिव। इंडिया इज अ बिग मार्केट। इसीलिए रशिया वार भी हुआ तो हमारे अगेंस्ट कोई बात नहीं कर पाया, क्योंकि 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। मैं तो कहता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन करना चाहिए। हम लोग यहाँ ढूंढते हैं मैकडोनल्ड किधर है, और जब इंग्लैंड जाते हैं तब ढूंढते हैं यार राइस कहाँ मिलेगा। बराबर है कि नहीं? आप गए होंगे तो हर वहां वही ढूंढते हो, चावल कहाँ मिलेगी, रोटी कहाँ मिलेगी। इंडियन फूड हैज अ ग्रेट मार्केट। बराबर है। आज भी मैंने कहा बिरयानी अच्छी कहाँ मिलती है, हमको भी ढूंढना पड़ता है। अच्छा मटन कहाँ मिलता है, हमको भी ढूंढना पड़ता है। और वो कंसेप्ट आपको लाना है, और वो लाने में आपको मदद कर रहा है जीएसटी। कैसे जीएसटी मदद कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक दोस्त की फैक्ट्री है चितड़े, उसके ऊपर बहुत सारे जोक भी बनाए जाते हैं कि वो दोपहर को 12 से 4 बंद रहेगा, और बहुत बढ़िया मिठाई बनाता है। हम उनको हमेशा बोलते थे यार आप अपने ब्रांचेस खोलो। ऐसा ही जब आपको याद है, आप चर्च गेट ऑफिस में मैं था, तो हम इनको एक आइसक्रीम खिलाए थे। हमारा एक दोस्त बनाया था कामत ने, उसके 3 आइसक्रीम बड़े फेमस थे, टेंडर कोकोनट, पान पसंद, और एक था जो याद नहीं आ रहा वो टेस्ट। हाँ, तो उसको मैं कामत जी को बोलता था कि यार इतना अच्छा आइसक्रीम बना दे तो सब जगह मिलना चाहिए, लंदन में मिलना चाहिए, दिल्ली में मिलना चाहिए, राजस्थान में मिलना चाहिए। बोलते कैसे बनाएंगे साहब, महाराष्ट्र में 13% सेंट्रल एक्साइज है, इतना ही फिक्स है, लेकिन सेल्स टैक्स हर स्टेट में अलग अलग है। हर स्टेट में मैं कहाँ सीए रखूँ, कहाँ उनके केसेस सॉर्ट आउट करूँ, और दूसरा इससे मेरी क्वालिटी में अफेक्ट होता है। दैट वाज आल्सो द कंसेप्ट ऑफ चित्रे। नाउ जीएसटी केम, नाउ ऑल ओवर इंडिया रिटर्न यू कैन फाइल फ्रॉम वन प्लेस। आप यहाँ तेलंगाना में बिजनेस करते हो, यहाँ बैठ के आप राजस्थान का भी रिटर्न फाइल करोगे, दिल्ली का भी करोगे, एक्सपोर्ट भी करोगे, एवरीथिंग करोगे। ईज ऑफ बिजनेस हैज बीन गिवन अ बिग चांस। आज इसीलिए आपको देखा जाएगा कुछ दिनों में अचानक हल्दीराम की ब्रांचेस शुरू हो गए, आपका पैराडाइज बिरयानी ऐसा हो जाएगा कुछ धीरे धीरे, इट विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर एक मैंने गया था, मेरे पिताजी 1960 में यहाँ एमए किए थे, तो हमेशा ये बोलते थे हर संडे मैं हैदराबाद में आता हूँ, ताजमहल में जाके एबिड्स में कॉफी पीता हूँ। दैट वाज हिज लग्जरी, गोइंग टू एबिड्स इन ताजमहल एंड टेकिंग अ कॉफी वाज अ लग्जरी। जब मैं हैदराबाद पोस्टेड हुआ, आई वेंट फर्स्ट टू दैट होटल, एंड देन आई मेट दैट होटल इज देयर फ्रॉम 1936, और अभी तक भी वो क्वालिटी मेंटेन हुई है। तो 2 बच्चे यंग आए थे, तो उनको बोला यार आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन नेक्स्ट जेन। तो उसने बोला आज हमारे 140 एयरपोर्ट पे आउटलेट है। दैट इज द वे ही इज कंट्रोलिंग फ्रॉम हिज ओन कीपैड। If it can be done from a person staying at Khairtabad, definitely it can be done by all of you. Let us come together and unite. Create your own market. अगर आप इंडिया के 25% पॉपुलेशन को भी सप्लाई करोगे, इट विल बी ह्यूज थिंग, इट विल बी डेफिनेटली ह्यूज थिंग। तो इसके लिए आपको सबको जेन नेक्स्ट को साथ आना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी चाहिए, जैसे अभी हमने एक रिसेंटली महाराष्ट्र में मेरे 7 डिस्ट्रिक्ट में हमने किया था, 7 डिस्ट्रिक्ट के सभी कांस्टेबल्स के बेटे को हमने 7, 8, 9, 10 बाईजू दिया था। क्योंकि द मोमेंट बाईजू के क्लास करेंगे, अभी लड़का मंचीरियल में पढ़ रहा है मेरे एरिया में, या आपका जहीराबाद में पढ़ रहा है, संगारेड्डी में पढ़ रहा है, नारायणखेड़ में पढ़ रहा है, लेट देम प्रोवाइड दिस, लेट देम लर्न दिस मॉडर्न टेक्निक।
दे फील कि दे आर कॉम्पिटिटिव। हमें क्यों अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए? क्योंकि अच्छे कॉलेज में हमको अच्छी संगत मिलती है। मुझे याद है मैंने एक IRS ऑफिसर को आई फोर्स हिम, रिक्वेस्टेड हिम टू टेक रिटायरमेंट एंड गो फॉर हार्वर्ड बिकॉज ही वाज सो चाइल्ड एंड एंटरप्राइजिंग कि वो कुछ भी कर सकता था। हार्वर्ड में जहाँ गया MBA करने, ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे थे। आज ही इज द टॉप बिल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट इन बिजनेसमैन इन इंडिया। तो लर्न वॉट एवर यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, क्रिएट योर नेक्स्ट जेन। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, जो मैं बताता हूँ हमेशा, एक जैन गुरु थे, आपने उनके काफी स्पीचेस भी सुने होंगे। जैन गुरु हमेशा अपने हाथों से ये निकालते बाल, इवन दे डोंट अलाउ टू ऑपरेट। तो उन्होंने इतना कहा था कि बच्चे इतने नहीं होशियार होने चाहिए कि वो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझे। ये चीज हमेशा याद रखना, बराबर है? बेटे माँ बाप की परछाई होती है। हम अपने जिंदगी में जो नहीं कर सकते वो हम बच्चों में देखते हैं। इफ आई लर्न इंजीनियरिंग फ्रॉम वालचंद, I want my son to learn from IIT. If I learn from IIT, I want my son to learn from Harvard. हम कुछ जो नहीं कर सके वो हम आपके थ्रू देखते हैं, इसीलिए आप हमारे फ्यूचर हो। आपके आंखों में हमें हमारा भविष्य दिखाई देता है। इसीलिए मैं ये जो विजन उसका था कि मिलिंद जी का, पहले 25% शुड गिव एम्प्लॉयमेंट टू 50% एंड सेकंड द नेक्स्ट जेन। एंड आई एम हैप्पी दैट यू हैव कन्वेड दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भी वेंटिलेटर आएगा, लेकिन आई केम बैक एंड आई मेट ऑल ऑफ यू। यू कैन टेक माई नंबर, आई एम ऑलवेज देयर। आपको कोई भी बिजनेस देखना हो, E-कॉमर्स हो, ये हो, कहीं भी ट्रेनिंग चाहिए, जो भी सीखना है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वी कैन ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इन डिक्की, वी कैन टेल यू, आप टेल एनी सिटी। I have jurisdiction over all Telangana. I can come down to Nizamabad, I can come down to Mancherial, I can come down to Karimnagar, Siddipet, कहीं भी मैं आ सकता हूँ। We can teach them. अभी भी देखो सबसे ज्यादा ओलंपिक वाले बच्चे आदिवासी होते हैं, उनको सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलते, वो ट्रेनिंग नहीं मिलते। इसीलिए हमें एकलव्य बनना है, तो हमको द्रोणाचार्य ढूंढना है। हो सकता है द्रोणाचार्य इनमें से कोई हो, तो आप अपना द्रोणाचार्य ढूंढिए। अगर वो तैयार ना हो तो उसका स्टैचू बनाइए, लेकिन दुनिया का बेस्ट धनुर्धर बनाइए, बनिए, दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी बनिए। यही हमारे विशेष के साथ में मेरे दोस्त पर थैंक यू। Thank you so much for such an inspiring session, sir. And we will definitely call you. I think this should have been your program, teaching all of us all the small details about life and business. Uh, Moving forward, we've just left with our star of the show, our founder chairman, Padma Shri Dr. Milind Kamble, sir. I request him to say a few words. आज के डिक्की नेक्स्ट जेन प्री लॉन्च इस मीटिंग के हमारे स्पीकर चीफ गेस्ट श्री सुरेंद्र मानकोसकर जी, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड है और आज ही इज पोस्टेड इन हैदराबाद GST कमिश्नर। थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड इंस्पायरिंग द यंग माइंड्स। आज जिनका जन्मदिन है, बर्थडे है, ऐसे हमारे डिक्की के नेशनल प्रेसिडेंट पद्मश्री रवि कुमार नारा जी, हमारे 2 नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राजा नायक जी एंड संजीव डांगी जी, एंड डिक्की नेक्स्ट जेन के मैत्रेयी कन्वेनर एंड तेलंगाना चैप्टर अरुण कुमार, और यहाँ उपस्थित तेलंगाना चैप्टर के ऑफिस बेरर्स, साउथ इंडिया के ऑफिस बेरर्स और कहीं कहीं से आए हुए सभी डिक्की के सीनियर लीडर्स एंड डिक्की के सब नेक्स्ट जेन। यू आर द फ्यूचर CEOs ऑफ कंट्री। तो आज इस प्री लॉन्च में यहाँ पे सभी के अपने भाषण सुने और सभी ने ये कहा
रिले रेस, और इस रिले रेस में जो दौड़ने वाला जो प्लेयर है, वो जो बैटन है वो दूसरे के हाथ में देता है, और वो दूसरा दौड़ता है, वो दूसरे के हाथ में देता है, दूसरा दौड़ता है और वो रेस जीतते हैं। तो सिमिलर वे हम कुछ 17 साल दौड़ के आए, फिर बैटन वी आर पासिंग बैटन टू यू, उसको लेके आगे जाना है। मानकोसकर सर ने बहुत ही छोटे 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 एग्जाम्पल दिए, आपने नोट किए सब। तो उन्होंने ये कहा कि जो सीनियर्स है उसको भूलना नहीं। यस, आप भूलेंगे नहीं ऐसे मुझे लगता है, मगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जिस भी आप बिजनेस में हो, जो बिजनेस करने का आपने तय किया है, उसमें यू हैव टू गिव द 100%, और स्मार्ट वे, स्मार्ट मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। आपको पता होगा नोकिया का जो सीईओ है, उसका एक लास्ट स्पीच हुआ जनरल बॉडी में, और उस स्पीच के बाद ही स्टेप डाउन फ्रॉम नोकिया सीईओ एंड एमडी। पता है नोकिया क्या था वो पता है? या हाँ, अभी वो भी पता नहीं है। तो नोकिया अभी जो आप यूज कर रहे हो, तो उसके पहले वाला फोन था नोकिया एंड्रॉइड। तो नोकिया फोन बहुत ही अच्छा चल रहा था। चेन्नई के नियर बाई ही उसकी बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, पूरे देश भर में सब लोग नोकिया फोन यूज करते थे। उसी में दूसरा फोन आया, कौन सा? सैमसंग। सैमसंग फोन आया, और वो सैमसंग फोन जो है टच स्क्रीन, और उसमें आपको बटन दबाने पड़ते थे। यहाँ पे टच स्क्रीन फोन आया, तो दूसरे दिन पूरा मार्केट में ये टच स्क्रीन फोन, नोकिया के फोन लोगों ने लेना बंद कर दिया। और कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी, इतने सब एम्प्लॉइज थे, वो सब रास्ते पे आ गए। अभी तो कंपनी बंद हो गई। तो जो लास्ट एजीएम है, उसमें नोकिया का सीईओ कहता है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, 12 घंटे नहीं 14 घंटे मैंने काम किया कंपनी के इसके लिए, विकास के लिए, उसके लिए। बस एक सिर्फ मेरे से एक गलती हो गई, मैंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अभी का जो समय है, अभी का जो आगे का जो फ्यूचर है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फ्यूचर। बिग डेटा, मेटावर्स, अभी नया चीज आ रहा है, से लेके बहुत सारी चीजें ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये सीख के आपके बिजनेस को वेरी स्मार्टली आपको चलाना पड़ेगा। इनोवेशन, आपको इनोवेशन पे ध्यान देना होगा। मैं गुजरात में गया था, और गुजरात में जब प्री लॉन्च गुजरात चैप्टर का जो मीटिंग था, तो उसमें मैं इंटरेक्ट कर रहा था लोगों के साथ। बहुत ही अच्छे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं लोगों के। और जब मैं उनसे बातें कर रहा था कि आप क्या करते हो, आपका शेड्यूल कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि यस बिल्कुल, मैं हमारा जो गार्ड है, जो प्यून है ऑफिस का, उसके पहले मैं जाता हूं, क्योंकि मेरे यही चाबी लगी हुई रहती है इधर। तो पहले जाके मैं मेरे फैक्ट्री को ताला खोलता हूं। ओके गुड। फिर जब तक लास्ट आदमी चला जाता है, उसके बाद में मैं ही उसका ताला लगा के आता हूं। फिर
बिल देने के लिए, चेक लाने के लिए, पेमेंट, ये सब मैं ही करता हूं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं तो गुजरात घूमा हूं बहुत सारा, आप भी घूमे होंगे, सब लोग घूमते हैं। तो जामनगर में रिलायंस की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, रिफाइनरी है ना जामनगर में, रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में। यानी कि रिलायंस के जो चेयरमैन अंबानी है, उन्होंने अभी देखा होगा सक्सेशन प्लान उन्होंने बनाया, तीनों बेटे के नाम 3 बिजनेस करके दिए। तो यह जो अंबानी है, ये कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में। तो मैं उन उद्यमियों से बात कर रहा था गुजरात के, उनसे बता रहा था कि अच्छा, और वो मुझे समझा रहे थे कि हम सब लोग इस प्रकार काम करते हैं। मैंने तो कहा फिर ये जो अंबानी साहब है, जिनका इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जहां जामनगर में हुआ है, लाखों लोग काम करते हैं, कभी मौका मिला तो आप देख लीजिए जामनगर की रिफाइनरी। तो मैंने कहा कि फिर तो मुकेश भाई अंबानी तो चादर शतरंजी लेके इधर ही सोते होंगे, क्योंकि आप 12 से 14 घंटे यहाँ ताला चाबी लगा के बिल्कुल कोई आने के पहले फैक्ट्री खोल रहे हो, जा रहे हो। तो उनको थोड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो पावर डेलीगेशन जो है वो आना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट पर्सन्स जो कलीग्स रहेंगे वो करना चाहिए। ये जो सब चीजें हैं ये आपको सीखने पड़ेंगी। आपके बिजनेसेस को अगर एक्सपांड करना है, ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस में क्लरिकल वर्क होता है। अच्छा, फिर अच्छा, वो अंबानी जी जाते हैं कहाँ पे? गोल्फ खेलने के लिए। वो गोल्फ खेलने के लिए थोड़ा ही जाते हैं, वो गोल्फ खेलते हैं तो उधर आजू बाजू में कोई नहीं रहता है, एक गोल्फ का शॉट मार दिया, फिर चलते चले गए, बाजू में दूसरा बिजनेसमैन है, उसके साथ बिजनेस की डील हो रही। ओके, फिर कॉफी शॉप, बिजनेस कहाँ होता है? बिजनेस मीटिंग्स कहाँ होती है आखिर? तो इस जगह पे होती है। तो इस प्रकार जो चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें, वो हमको देखना पड़ेगा। जो लेसन्स जो है हिस्ट्री से, वो हमको उठाने पड़ेंगे। और हमारा जो बिजनेस है, जो एक स्टार्टअप का बिजनेस है, वो कैसे आगे बढ़े वो देखना चाहिए। मैं 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ, एक ईडीआई अहमदाबाद जो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रीमियर इंस्टीट्यूट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड ईडीआईआई, ठीक है, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, उसका चेयरमैन हूं। तो बच्चों के साथ ऑलवेज इंटरेक्शन होते रहता है। तो मैंने ये कहा कि स्टार्टअप स्टार्टअप जब बताने लगा, तो उसके ऊपर जब चर्चा हुई तो ये ध्यान में ये आता है, देखिए हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर, आज 73,000 स्टार्टअप्स को रिकॉग्निशन मिला है डीपीआईआईटी से, ठीक है, नियर अबाउट 70 यूनिकॉर्न्स और होने जा रहे हैं। हम दुनिया की 3rd स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए हैं। ये सब चीजें हैं, ये 8-10 साल में हुआ है। देयर इज कंप्लीट इकोसिस्टम। और जो हमारे स्टार्टअप्स जो है, उन्होंने बहुत सारा एफडीआई जो है वो भी लेके आए। ये कौन से किस प्रकार के स्टार्टअप्स हैं? सबसे ज्यादा तो फिनटेक में काम करने वाले स्टार्टअप्स, फिनटेक, एग्रीटेक, फूड टेक, इसमें काम कर, लॉजिस्टिक के जो स्टार्टअप्स जो है, इन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई जो है अट्रैक्ट किया है। तो ये जो चीजें है, आज ये जब हम बच्चों से बात करते हैं तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं कहता ही हूं। देखिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए या स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
क्या, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आइडिया। आइडिया से काम नहीं चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पैशन। क्या है? पैशन। थोड़ा जरा, हाउ इज द जोश? लो सर। क्या ये सब बोलने को आता है क्या नहीं है आप सब लोगों को? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैशन। पैशन होता है और पैशन के साथ हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं। मगर हर एक को ऐसे लगता है कि मुझे जुकरबर्ग भी होना है दूसरे के। सर मानकोसकर सर, आज हम जब देखते हैं इस स्टार्टअप्स के इसमें, the mortality rate of startups in India is very high. Very high startup mortality rate. Why? Not just India, it's a worldwide. आपके पास क्या है? क्या है? पैशन। आपने बिजनेस शुरू किया, मगर जो मॉर्टेलिटी रेट है उसका कारण है पेशेंस। द पेशेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैशन। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, लिख के रखिए। पैशंस तो होना ही है, मगर उसके साथ में पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आज के लिए आपको एक लेसन, ठीक है। दूसरी बात, यू आर डिक्की नेक्स्ट जेन, आप सब लोग नेक्स्ट जेन हो। डिक्की की जो लीगेसी है, दैट लीगेसी यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। क्या लीगेसी? What is the legacy of DICCI? What is the philosophy? What is the vision of a DICCI? The vision of DICCI. नाराजी ने कहा, be job givers. We want to become a job givers, job creators, taxpayers. हमको बनना है। आज देश में या पूरी दुनिया में जिस टाइप से इकोनॉमी जा रही है उसमें, और ये पेंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, ये कौन सॉल्व करेगा? ये स्टार्टअप सॉल्व करेगा। इस देश के एंटरप्रेन्योर्स जो है वह लोगों को नौकरी देंगे। तो वी आर अ पार्ट ऑफ अ इंडियन इकोसिस्टम। हम इस देश के नागरिक है, ठीक है। उंगली उठाना ठीक है, मगर बीइंग वी आर एंटरप्रेन्योर, ये हमको ये समझना चाहिए मेरी भी जिम्मेवारी है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो रोजगार कैसे बढ़े। सो दिस इज द लीगेसी ऑफ डिक्की। यह सोच रखती है इस देश के इकोनॉमी के हमको कंट्रीब्यूटर बनना है। मुझे किसी ने पूछा था कि मिलिंद, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ डिक्की? आखिर क्या गोल है डिक्की? देखो, हम जिस वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बारे में जो परसेप्शन है, क्या परसेप्शन है? अरे दे आर द जॉब सीकर्स। उनको वो नौकरी मांगने वाले हैं। ओके, उनको स्कॉलरशिप चाहिए, उनको और दो चीजें चाहिए। ये सब चीजें जो है, दे आर द सीकर्स। यह हमारे बारे में परसेप्शन है, ये मांगने वाले हैं। दिस इज अ परसेप्शन, एंड एग्जैक्टली वी वांट टू चेंज दिस परसेप्शन। वी आर नो मोर सीकर्स, नाउ वी आर गिवर्स। दिस इज द लीगेसी ऑफ अ डिक्की, एंड दिस लीगेसी you have to carry forward. Be job givers. And what is the ultimate goal? What is the ultimate goal of DICCI? The ultimate goal of DICCI is that we want to be a contributor of the Indian economy. We don't want to become a liability. We want to become an asset of this country. इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। दिस इज द फिलॉसॉफी ऑफ, दिस इज द लीगेसी ऑफ डिक्की।
जो कैरी करने की जिम्मेवारी अब आप सब लोगों के ऊपर है और वह आपको कैरी करना है. वी आर हियर टू गाइड, सपोर्ट, विल नॉट प्रॉम्प्ट एनीथिंग. जब आप पूछोगे कि ये कैसे है, हमें जो रास्ता मालूम है उस रास्ता आपको बताएंगे सभी ऑल ओवर इंडिया. और एग्जैक्टली, एंड वी आर ट्राइंग to address the aspirations of young Dalit youth in the country to become an entrepreneur, to become an startup. Because ये बोल रहे हैं, उसके पहले नाराजी और राजा सर ने कहा, बताया कि बिफोर डिक्की there was no support system. After डिक्की there is a complete ecosystem. This we have first created. For whom? For you. अगर आप कल को ये न बोले हमको कि यार इतना मार्केट इकोनॉमी इतनी बढ़ रही थी इंडिया में, इतने बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज थी, तो ये हमारे जो है पेरेंट्स, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, यह आप हमको न बोले. इसलिए देयर इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम, देयर इज अ कंप्लीट पाइपलाइन. असीम जो नाराजी ने कहा, टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया है, यू विल गेट 30 लाख रुपए सीड फंडिंग. आइडिया मैच्योर हो गई टू सेटअप फैक्ट्री, यू विल गेट फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड अप टू 15 करोड़. ठीक है, कहां बेचना है? भारत सरकार, पूरा बड़ा मार्केट है, 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, हैंड होल्डिंग, मेंटोरिंग, नेशनल SC/ST हब और डिक्की के ऑफिसेस. दिस इज द कंप्लीट पाइपलाइन that we have created, and this legacy जो है हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है, और उसको आपको आगे लेके जाना है. और बस आज प्री लॉन्च के इस प्रोग्राम में मैं इतना ही कहूंगा कि केवल हम बोल नहीं रहे हैं भाई, हम बोल नहीं रहे हैं. वी हैव क्रिएटेड, we have convinced the central government, we have convinced the state governments, each and every state government. DICCI is a nationally recognized organization. अभी 21 तारीख को RBI गवर्नर के साथ मीटिंग है. RBI गवर्नर के साथ, उसमें कौन है? CII प्रेसिडेंट, FICCI प्रेसिडेंट, ASSOCHAM प्रेसिडेंट एंड DICCI प्रेसिडेंट. वहां क्या होता है? The RBI governor wants view from the industry corners, how economy is moving और क्या हो रहा है इकोनॉमी. सो अकॉर्डिंगली उनको मॉनिटरी पॉलिसी तय करनी होती है. सो उसमें वी आर देयर, डिक्की इज देयर. तो ये किया हम, ये डिक्की ने किया. ये जो बैठे हुए हैं सब लोग, जो फर्स्ट, जो भी हमारी टॉप लीडरशिप है, सौंदर राजन से लेके सब लोग आए हुए, डिक्की के जो मेन फादर बॉडी जिसको हम बोले, क्या है फादर बॉडी. तो दिस फादर बॉडी क्रिएटेड कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर यू. सो ये हमने किया है. नाउ अभी आप नाव में सवार हो, तो बस समुंदर है सामने, तो आप नाव में सवार हो तो नौका चलाइए. अगर कहां पे तकलीफ आएगी तो वी आर देयर, वी आर हियर टू सपोर्ट यू. मैं एक आखिरी बात आपसे कह के मैं यहां रुकने वाला. देखिए, जो गरुड़ पंछी जो होता है उसको क्या, ईगल, जो ईगल जो है, ईगल का लाइफ 60 साल का होता है, उसका फर्स्ट लाइफ 30 साल का होता है. सब उसके नाखून बढ़ जाते हैं, जो चोंच जो होती है वो जाता है 6 साल भर कहीं, वो सब तोड़ के फिर नया लाइफ 60 साल जीता है. मगर उसका जन्म कैसे होता है? जब ईगल जब बच्चा होता है तब उसकी माँ
उसको लेके चोंच में पकड़ के उसको इतना ऊंचा लेके जाती है और वहां से उसको नीचे छोड़ देती। वो छोटा बच्चा है, वो नीचे आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं गिर जाऊंगा तो क्या क्या हो जाएगा मेरा, कुछ पता नहीं। मगर वो बच्चा होने की वजह से उसके जो पंख है वो भी उतने मजबूत नहीं होते हैं जो छलांग लगाने के लिए। तो बस उसको लगता है, तो माँ वो देखती रहती है बच्चा नीचे आ रहा है, तो जब तक, मगर वो पंख फैला नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करता है। सब उसके माँ को ध्यान में आता है कि ये अभी बच्चा गिरने वाला है, तब फटाक से उसको उठाती, फिर उसको ऊपर लेके जाती है, फिर वहां से छोड़ती है, जब तक वो पंख फैला के छलांग न लगा दे। यहां तक उसकी ट्रेनिंग करती है और उसको छोड़ती है। तो भाइयों, डिक्की का भी वही काम है, जो अपने पंख है उस पंख में जान भरने का काम डिक्की पूरे दिल से देश भर में कर रही। मकसद यही है, इस देश के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो नौजवान हैं वह उद्यमिता में, वह उद्यमी बने, वह असेट क्रिएट करे, वह जॉब क्रिएट करे। यही एक कोशिश है और इस कोशिश का अगला पड़ाव पासवान जी यहाँ पे है, वो है डिक्की नेक्स्ट जेन। सो वी आर हैंडिंग बैटन टू यू। थैंक यू वेरी मच, बाय। Thank you so much, mm, Chairman sir, for your kind and inspiring words and getting the Josh back in the audience. Now I would like to call Arun to do a formal vote of thanks, but I would like everyone to please be at their place. We have something else to do after vote of thanks. Arun. Good evening, everyone. Hello. Hi. Hello. If I say hello, you have to say hi. If I say hi, you have to say hello. Hi. Hi. Hello. Yeah. Good evening, everyone. Before I say vote of thanks, I would like to introduce myself. I'm Arun Kumar. I completed my master's from Usman University, and I joined in DICCI in 2017. When I came to meet Padma Shri Nararavi Kumar sir, on the day we had a formal discussion. On the day Ravi sir asked me, "Did you have any business idea?" Then I said, "Sir, I have an idea of e-commerce, doing online e-commerce of grocery." Then sir said on the day, "Kindly keep your idea in a format and try to get for me." Then I written on paper and handed over to Ravi Kumar sir. On the day Ravi Kumar sir said, "Okay, fine, and try to make this as a project report and then come to me." And I went off and again I written a project report and then I came to Ravi Kumar sir. On the day Ravi Kumar sir said, "Yeah, fine, it is good. What are your future ideas?" On the day Ravi Kumar sir said, "What are your future ideas?" I said that, "Sir, within 2 months, I am flying to Australia to do my master's in Central Queensland University." Then Ravi Kumar sir said, "Your idea is excellent. You want to be here or you want to fly Australia? That is in your decision." Then I talked with my parents, with my family, and my family whole and soul taken decision and came to DICCI office and met Ravi Kumar sir. On the day, my parents said that, "Sir, we are dropping out of idea to send our son to Australia and we'll want continue Arun Kumar in DICCI." On the day, my family, I don't know the actual word. Yeah, yeah. On the day, my father
and my mother handed over me to Dicky. In Telugu, we'll say that Dattati Vadam. ఆ రోజు మా తల్లిదండ్రులు నన్ను రవి సార్కి డిక్కీకి దత్తత ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజు దత్తత ఇవ్వడం ద్వారా 2017 ఈ రోజు నేను మీ ముందు నిల్చొని డాష్ మీద ఉండి మీ ముందు మాట్లాడగలుగుతున్నాను. ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ డిక్కీ. అండ్ ద సేమ్ టైం ఆ రోజు నాకు డిక్కీలో అవకాశం రావడం ద్వారా డిక్కీ జిహెచ్ఎంసీ కాంట్రాక్టర్ రావడం జరిగింది. డిక్కీ జిహెచ్ఎంసీ కాంట్రాక్టర్ అయిన తర్వాత రీసెంట్గా ఏవైఎల్ అంబేద్కర్ యంగ్ ఆంటర్ప్రినర్ లీగ్, అంబేద్కర్ యంగ్ ఆంటర్ప్రినర్ లీగ్లో త్రూఅవుట్ ఇండియా వైడ్గా అప్లికేషన్స్ కాల్ఫర్ చేశారు. హూ ఆర్ ద ఆంటర్ప్రినర్స్ హూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఇన్ ఇండియా. ఇలా కాల్ఫర్ చేసినప్పుడు నేను కూడా అప్లై చేయడం జరిగింది. On the 131st birth anniversary of Dr. Baba Saheb Ambedkar in Dr. B.R. Ambedkar International Center, I have received a award of Dr. B.R. Ambedkar Excellence Award by Dr. Virendra Kumar, Minister of Social Justice and Empowerment. ఇదంతా డిక్కీ ద్వారా జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న అందరు డిగ్నిటరీస్ చెప్తున్నారు, మేము డిక్కీ తయారు చేసిన వ్యక్తులం కాము, మేము సొంతంగా తయారు చేసుకున్న పాతని. కానీ నేను డిక్కీ రెడీ చేసిన ప్రోడక్ట్ కానీ మీ ముందు చెప్తున్నాను. On the day in 2017 when I came to Dickey, I also sat like you in front of the dais, but on 2022 today I am sat on the dais of Dickey. Then I am inviting a NextGen also to be part of the dais in future. I started another venture called Eco Freak Innovations, which is a battery recycling plant which is situated in DICCI, sir. And I'm also invested in smart green aquaculture also. Fine. Okay, thank you. Thanks for the participation. And I want to continue vote of thanks. It has been such an honor to be part of this wonderful event. On behalf of this organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests. Thank you. A wide round of applause for the honorable guests. Thanks for all the participants who made the event memorable one. Finally, I would like to thank all you present for here making the time to be with us today and helping us event a grand success. Thank you. Jai Bhim. Thank you so much. So now that the formal program is closed, we on behalf of DICCI NextGen wanted to have a small birthday celebration for Ravi sir. So I request Renu to please arrange the cake. And I would also like to say a few words, sir, for Ravi sir, who so for me, Ravi sir is somebody who taught to not to think outside the box or inside the box, but to think that there is no box and there is no limit to our thinking. And a leader is the one who is the one who knows the ways, who goes that way, and who also shows the way, is what Ravi sir is for all of us. I call Vanaja ma'am, Seema ma'am,
DG Aditya on the Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daras. Happy birthday to you. Baba Saheb bless you, dear. Baba Saheb bless you, dear. requesting all the national team members also please come forward. Sunil, आइए. रेणु Yesterday, Renu Madam birthday is also there. Kindly convey wishes to her. Happy birthday to you.
Okay.